Welcome back to another episode of SMHC Betak, live from Dubai. That means I have made it. Thankfully, I did not forget my passport this time around. I am sitting here in my Dubai apartment slash studio. थोड़ा सा हमने अर्ली कर लिया. वजह उसकी ये थी कि एक तो आई वाज जस्ट सिटिंग हियर वेटिंग फॉर इट टू हैपन, एंड सेकंड आई फील लाइक 1 घंटा 20 मिनट चला ही जाता है, एंड आई वांटेड टू गेट यू गाइज want you guys to get rid of me before 12 hopefully. तो इसकी वजह से मैंने फिर 10-15 मिनट पहले मैंने कहा कि जी इसको स्टार्ट कर लेते हैं. बट एनीवेज आज हमारी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग फ़र्क है. 2-3 चीज़ें मैं पहले अनाउंस कर दूं. एक तो ये कि मेरा एक हेल्पर ऑफ सॉर्ट्स आ गया हुआ है, जो कि मॉडरेट करने में भी हेल्प करेगा स्ट्रीम यार्ड के ऊपर. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो डिस्कॉर्ड बहुत जल्द लाइव करेगा इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर. आई एम होपिंग कि मैं फ्राइडे को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. दूसरा ये कि अबीर खान साहब थैंक यू. अबीर भाई कह रहे हैं जी मुजी भाई यू लुकिंग वेरी सेक्सी टुडे. थैंक यू अबीर भाई. मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि मैं पूरा दिन जाइटेक्स चल रहा है यहाँ पर, और कल मैं गया था जाइटेक्स के ऊपर और आई कुडंट. आज मैं उठा एंड आई वाज टू ओवरवेल्म्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मैं बिस्तर में था और मैं नाइट सूट में था अप अंटिल हाफ एन आवर को. जब मैं गया हूँ जाके मैं नहाया हूँ और मैंने अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल किया. अगर आपने मुझे आधा पौना घंटा पहले देखा होता ना तो आपके होश उड़ जाते. बट एनीवेज डिस्कॉर्ड विल बी लाइव बाय फ्राइडे, सो दैट इज ग्रेट. सेकंड, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इस शो के अंदर मैं बड़ा ऑनेस्टली बता देता हूँ. मैंने उसको थॉट्स दी हैं और अब तो कुछ चीज़ें आ रही हैं. पहला ये कि जितनी भी लाइव्स होंगी उसमें सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंडिंग थिंग्स दैट इंटरेस्ट मी, हर किस्म की ट्रेंडिंग थिंग नहीं बट थिंग्स दैट इंटरेस्ट मी, उनके ऊपर रिएक्ट करना, उनको समझना, उनको समझ के आपको बताना. वो पहले हाफ में होगा और फिर सेकंड हाफ में हम आपसे क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे. कुड बी रैंडम, कुड बी अबाउट द टॉपिक एज वेल. दूसरा ये कि वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू डू इज आई वांट टू ब्रिंग इन गेस्ट्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गेस्ट्स. जनरली पॉडकास्ट से भी थियोरेटिकली मैं गेस्ट लाता हूँ, लेकिन यहाँ पर essentially formatting फ़र्क होगी. We'll again around a particular topic we'll bring in a particular thought leader जो कि established है उसके अंदर already, और हम उनसे जो है वो एक sort of live formatting में, यानी कि जिस तरह podcast के बहुत सारे guests होते हैं, बड़े सारे लोग मुझे कहते रहे हैं कि you know what, like if there is a possibility we can ask them questions. तो because I have the opportunity here, I'll bring them on to this platform and you guys can then ask them directly कि कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर आपके आते हैं. सो वो चीज़ एक तो हो जाएगी. एंड देन लास्टली क्या था, खैर एनीवेज. सो दीज वर सम अपडेट्स जो कि मेरी तरफ से थी. जाइटेक्स का ये हुआ कि जी मैं आया और मैं आके आई वाज पहले तो एक्चुअली जिस दिन मैं 13th को आना था मैंने सोचा था मैं 13th को आऊँगा, मैं 14th को रेस्ट करूंगा, 13th को भी रेस्ट करूंगा, अर्ली फ्लाइट थी, 14th को भी रेस्ट करूंगा और फिर मैं आराम से पूरा हफ्ता जाइटेक्स करूंगा. मैं आया हूँ 14th को लेट नाइट पहुंचा हूँ. अगले दिन सुबह उठ के जी जाइटेक्स चला गया, नॉर्थ स्टार पहली कॉन्फ्रेंस थी उस पर गया. और एक तो उस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इट्स क्रेजी ओवरवेलमिंग, इट्स ह्यूज, देयर आर वे टू मेनी पीपल. बट मोर इम्पोर्टेंटली बहुत मेरे लिए ओवरवेलमिंग हो गया बिकॉज आई स्टार्टेड, मेरे थॉट ये थी कि मैं जाऊंगा, मैं जाके कॉन्फ्रेंस के ऊपर आई जस्ट लुक अराउंड, आई सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, क्या अप एंड कमिंग चीज़ें हैं. There were a bunch of Pakistanis there. A lot of people came up to meet me, which was great. I feel honored. But वो थोड़ा सा overwhelming हो गया because a lot of people kept on messaging me on LinkedIn, on email, on WhatsApp. मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से लेके कि you know हम आए में जाइटेक्स पे हमसे मिल लें, हमसे कॉफ़ी कर लें, हमसे ये कर लें, हमसे वो कर लें. अच्छा मेरा मसला ये है कि मैं एक अजनबी शहर में हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, और मैं मिलना भी चाह रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे मिलूँ इतने सारे लोगों से. तो ऑनेस्टली मैं कल इतना ओवरवेलम हो गया कि फिर मैंने सोचा, वो था ना आपके पास इतना सारा काम होता है, इतना सारा होमवर्क होता है कि आप कहते हो यार मैं सो जाता हूँ, वो वाला सीन है. तो मैंने आज पूरे दिन आई जस्ट वेंट टू स्लीप एंड आई जस्ट डिडंट, I literally decided to skip the conference, and I don't know if I'll go tomorrow as well because I'm a little overwhelmed. I'll be very honest in terms of my feelings. You know, one of the things that people, एक चीज़ बड़ी annoying लोग करते हैं, I don't know why they do it. If any one of you ever meets me, please don't do that. People come and they ask me कि अच्छा तो क्या चल रहा है, अच्छा फिट, अच्छा एक पर्सनल सवाल है बट आप करते क्या है ना. अच्छा मैं कहता हूँ कि यार यू नो व्हाट, लाइक मैं कर रहा हूँ पॉडकास्ट वगैरह. हाँ लेकिन पॉडकास्ट तो वैसे ही, आप पॉडकास्ट के अलावा क्या करते हैं. एंड वो एक टोन होती है जो कि बेसिकली टोन ये कह रही होती है कि आप, ये तो शोल मेला है ना, तो आप पैसे किस तरह कमाते हैं, आपकी फुल टाइम जॉब क्या है. एंड
somehow that really makes me feel like कि पता नहीं, I mean, मेरा काम चल रहा है यार, मैं बस पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मैं जो चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड हूँ मैं उन चीज़ों को परस्यू कर रहा हूँ और मैं उसमें मुझे दरमियान में अल्लाह का शुक्र है आगे पीछे अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, मैं पैसे भी कमा लेता हूँ. बट when you ask me a question like that, I suddenly genuinely feel like I'm doing something wrong in my life. And then I start thinking, Acha, I don't know, maybe I should be doing a job. Maybe I should be doing something. Um, I don't know. It really overwhelms me. I feel like मैं कल literally रात को आया, मुझसे कुछ 4-5 लोग मिले, 4-5 लोगों ने यही बोला. And उसके बाद फिर I came back, I messaged my wife, I was like, listen, I feel such a loser, कि I don't know what I'm doing in my life. मैं बिल्कुल, like, मेरा system चल रहा था, बड़ा अच्छा था. And then suddenly, everything sort of crumbled down and I was like, I don't know, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मेरे plan सही हैं, गलत हैं, क्या system है. So, I mean, just don't do that. If you don't understand, I mean, I don't know, like, would you go to, let's say, Joe Rogan and say, listen, यार तू podcast कर रहा है, उसके अलावा क्या करता है? या डकी भाई and say, यार तू content creation करता है, उसके अलावा क्या करता है? I don't know why people ask me this question, के, you know, what else do you do? Like, am I supposed to do something else? Why isn't what I do good enough? Like, what's the deal there? I don't know. Anyways, that was, that really brought me down last night. And then today I decided I'm not going to go at all. But anyways, आज की बात कर लेते हैं. आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या हो रहा है. आई डोंट नो आप लोग नोटिस कर रहे हैं नहीं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए हुए हैं चाइनीज बेल्ट एंड रोड की 10 इयर्स की एनिवर्सरी है. हमने बड़ा सुना था जी, बचपन से सुनते आ रहे हैं. CPEC और CPEC बढ़ रहा है और CPEC is a small component of the Belt and Road Initiative, and I really wanted to talk about that because that is at the heart and core of essentially the changing world order. मैं बार बार changing world order की बात क्यों करता हूँ इस वजह से, because the world is changing and this decade the world is going to completely redesign itself, and आने वाले वक्त में आप तमाम लोग जो हैं, आप लोग पैसे किस तरह कमाएंगे, आपकी मतलब गवर्नमेंट्स किस तरह से होंगी, हाउ डू यू इंटरैक्ट विद पीपल, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स अराउंड ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज, एंड ये तो चले बहुत फलसफे वाले कॉन्सेप्ट्स हो गए. इवन हाउ वी लिव आवर डेली लाइफ, वो चीज़ें सारी चेंज हो रही हैं. और अगर आज समझ लेना कि वो चेंजेस क्या हैं और वो चेंजेस किस तरफ जा रहे हैं, तो जो दरमियान में मुझसे लोग सवाल पूछते रहते हैं ना कि बिजनेस एनालिस्ट का स्कोप है कि नहीं है या साइकोलॉजी का स्कोप है कि नहीं है, तो वो वाले सवालात जो कि इंडिविजुअलिस्टिक सवालात हैं, वो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाते हैं. आपको अपनी मैक्रो पे अपने आप को अलाइन करना है विद द फ्लो ऑफ द चेंज. बाकी माइक्रो के क्वेश्चंस आपके अपने हैं, वो अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना है और आपने जाना है. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जो है वो I would definitely urge. I know for a fact जब मैं चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता हूँ, मैं जियोपॉलिटिक्स की बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं यार क्या बकवास है, मिस कराओ यार, कोई वो है. लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, पूरी दुनिया इन चीज़ों के बारे में बात कर रही है और उस वजह से बात कर रही है बिकॉज पूरी दुनिया जो है ना वो आइडेंटिफाई कर रही है कि आने वाले वक्त में हमने क्या करना है. और खासकर अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने थोड़ा सा ना, आज पूरा दिन मैंने, आई वाज इन माय नाइट सूट, आई वाज सिटिंग बैक देयर ऑन अ सोफा एंड आई वाज वाचिंग यूट्यूब ओवर हियर, एंड लार्जली व्हाट आई हैव बीन डूइंग वाज कि मैं जो है वो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल सिस्टम्स, द जियोपॉलिटिक्स, द दिस एंड दैट. एंड उसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि मुझे मेरा आउटलुक जो था पाकिस्तान के बारे में बड़ा नेगेटिव था पिछले कुछ अरसे में, और वो सडनली नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया. इसमें दो चीज़ें हुई. एक मेरी पॉडकास्ट हुई रिसेंटली जिसमें एक साहब आए, उन्होंने आके मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट दी, जिससे थोड़ी रीअलाइनमेंट हुई मेरे अंडरस्टैंडिंग की या मेरे मैट्रिक्स की. जिस तरह लोग पूछते रहते हैं क्या डॉलर का आउटलुक, तो अकॉर्डिंग टू दैट साहब, और वो बड़ा लेजिटिमेट मुझे लगा, तो डॉलर जो है वो अब स्टेबिलिटी पे आ गया 280 पे, और वो कुछ अरसा स्टेबिलिटी बरकरार रखेगा, विच वॉज ग्रेट टू हियर. इसी के साथ साथ पाकिस्तान का जो वर्स्ट पॉसिबल टाइम है इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट, इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स, वो जून में ओवर हो चुका है और अब थोड़ा सा वापसी हम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं. दैट वाज अगेन अ ग्रेट थिंग टू अंडरस्टैंड, सो दैट अपना सेंटिमेंट है ना, आउटसाइड जितना भी मुझे नेगेटिविटी मिल रही हो, मुझे पता है कि यार चलो ठीक है, आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. फिर इसी के साथ साथ आज जो मैंने देखा उसमें अगेन we'll talk about the monetary system as well, but I really wanted to talk about the Belt and Road Initiative, and largely because for a lot of people they're just very confused कि चाइना क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहा है, पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा है.
और इसको समझने से पहले मैं एक और नैरेटिव को डिबंक करना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों के दिमाग में ना हमेशा से आईएमएफ को एक बूगी मैन बना के पेश किया गया कि जी आईएमएफ जो है ना वो तो बस बैंकर है ना, उसका तो काम है इंटरेस्ट देना, पूरी जिंदगी आपसे इंटरेस्ट लेना, वो तो इस वजह से वो करता है, which is very hard because IMF gives you low interest loans and IMF जिन कंट्रीज में गया और जिन लोगों ने एक्चुअली IMF की सुनी है उनके पास IMF दोबारा नहीं गया, इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, इंक्लूडिंग इंडिया इन 1991। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारा वो जो एक नैरेटिव था हमारे पॉलिटिशियंस ने जो हमारे अंदर डाला हुआ था आईएमएफ के बारे में, उसी तरीके से अब एक सर्टेन नैरेटिव है जो कि चाइना के बारे में वेस्टर्न जो 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 ग्लोबल नॉर्थ है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो कंट्रोल करना चाहता है पूरी दुनिया को, उन्होंने डाला हुआ है कि डेट ट्रैप है, डेट ट्रैप है, डेट ट्रैप है। तो पहले सवाल ये, पहली चीज ये समझने की कि चाइना क्यों पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके लिए मैंने एक बहुत ही जबरदस्त थ्रेड पढ़ा रिसेंटली जिसने मेरा दिमाग ही ब्लो कर दिया। आई डोंट नो कि किस हद तक आप समझ पाएंगे, सो अगर आपको नहीं समझ आ रही हो तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा और मैं उसको ना डिटेल में स्लो एंड स्टडी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बट लेट मी शेयर द विंडो राइट अबाउट नाउ। Share screen, share screen, and share. Okay, can you guys see this? Please let me know if you can see this. Oops. The hell? यार आजकल ना मैं क्योंकि रैंडम बकवास साथ साथ चलती रहती है तो जस्ट थॉट कि मैं वो भी शेयर कर दूं। आजकल जो है ना मेरा फेवरेट गाना हुआ है झुमका। व्हाट झुमका टा 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 टा। खैर एनीवेज, अच्छा जी, इट्स ये थ्रेड है, बड़ा अच्छा है। I'd love to read it out to you. It's raining dollars in China, $80 billion per month, $2.6 billion per day is almost $2 per day for every Chinese person, child, adult, grandma, and expat. China is currently hiring people to spend $2 billion per day as it tries to get rid of all these dollars and convert them into something more tangible. Grain, gold, metals, oil, gas, a railroad in Indonesia, a canal in Thailand, anything. The problem is all storage are already full. Belt and Road burns only about $5 billion per month, and we need to spend $80 billion. China used to send most of this back to the United States in the form of US treasuries, but that of course is no longer interesting because it will be stolen like Russian and Iranian dollars, and it's still dollars. If you have any idea how to spend $2.6 billion per day, send an email to help@gov.cn. Hurry up. In a time it took to write this, another $100 million dropped. अच्छा, इस टाइम शोगल में एक थॉट एक्सप्लेन किया। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं। थॉट क्या है? थॉट ये है कि जी चाइना जो है ना वो $80 बिलियन इस महीने, हम आपने सुना होगा पाकिस्तान में ना हम बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की, कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी तो हम ज्यादा डॉलर्स कमाएंगे, अगर हमारी इंपोर्ट ज्यादा होंगी तो हम ज्यादा डॉलर्स जो खर्च कर रहे हैं वो लोन लेके करेंगे। चाइना जो है वो इस महीने उसने $80 बिलियन की ज्यादा एक्सपोर्ट्स की हैं, विच बेसिकली मींस कि वो अपने खर्चे निकालने के बाद भी उसके पास $18 बिलियन इन कैश है। और चाइना के पास हर साल इसी तरह बहुत सारा कैश एक्यूमुलेट होता रहता है। अच्छा, अब ये जो कैश चाइना के पास एक्यूमुलेट होता है ना, एक्सेस कैश, अब हम सोचते हैं अच्छा जी चाइना के पास कैश है तो कैश है, क्या हो गया? लेकिन आपने ये समझना है कि ये कैश क्योंकि दुनिया पूरी ट्रेड कर रही है यूएस डॉलर्स में, वो किसी और करेंसी में नहीं कर रही, राइट? वो पाउंड्स में नहीं कर रही, वो रुपीज में नहीं कर रही, वो युआन में नहीं कर रही, वो डॉलर्स में कर रही है। सो चाइना के पास डॉलर्स आते हैं। अब दो तीन चीजें बड़ी मेजर हुई हैं रिसेंटली। पहली चीज ये हुई कि रशिया के जो डॉलर्स थे वो यूएस ने सैंक्शन कर दिए। जब रशिया से फटा हुआ तो उन्होंने डॉलर सैंक्शन कर दिए, विच बेसिकली मींस कि चाइना के पास अगर डॉलर्स हैं तो वो यूजलेस हो सकते हैं पोटेंशियली इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर। तो चाइना को ये भी टेंशन है कि यार मुझे यूएस डॉलर्स मैं होल्ड करूं या ना करूं, लेकिन ये तो आज है, आज से 10 साल पहले वो ये क्यों कर रहे थे? और दूसरा ये कि अमेरिकन सिस्टम में सर्टेन फॉल्ट लाइंस हैं जिसकी वजह से ग्लोबली लोग अब डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड से भी हटना चाहते हैं। उनको ऑलरेडी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि यार अमेरिका जो है ना वो अपने डॉलर की ट्रेड की वजह से पार्टी करता फिर रहा है। अगेन मोर ऑन दैट लेटर। बट चूंकि वो हटना चाह रहे हैं तो इस वजह से वो डॉलर संभाल के रखना वो नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जाहिर है आपके पास महीने के अगर
लाइक आप एक धंधा कर रहे हैं, आपने सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद अगर 1 लाख रुपया महीने का अगर बच रहा है ना, अगर आप स्मार्ट आदमी हैं तो आप उस 1 लाख को पड़े नहीं रहने देंगे, क्योंकि अगर वो पड़ा रहेगा तो वो डिवैल्यूएट होगा, वो इन्फ्लेशन में बर्न होगा। आप उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे ताकि उसके ऊपर आपको मजीद रिटर्न मिलते हैं ना, क्योंकि चाइना स्पेंड तो कर नहीं सकता उसको कहीं पर, तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है। अच्छा, हिस्टोरिकली वो इन्वेस्ट करता रहा है इन यूएस ट्रेजरीज, विच बेसिकली मींस कि चाइना ट्रेड करता है, ट्रेड करके जो भी ट्रेड का सरप्लस है ना, मतलब जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं उसके, वो जाते हैं और वो जाके अमेरिका में पार्क कर देता है। विच इज वाई नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि क्यों अमेरिका जो है वो यूएस डॉलर में ट्रेड करवाना चाहता है, बिकॉज यूएस डॉलर की ट्रेड की जो जो सरप्लस है, वो सरप्लस सारा का सारा जाके यूएस में पार्क होता है, और यूएस जो है ना उस सरप्लस को इस्तेमाल करके अपनी कंजम्पशन करता है। यूएस डिफिसिट में, यूएस पिछले डेकेड्स में से डिफिसिट में, मतलब वो बना इतना नहीं रहा दुनिया के लिए वैल्यू जितनी वो कंज्यूम करे। वो पार्टी कर रहा है बैठा, वो गाड़ियां खरीद रहा है, वो कह रहे हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं, सबसे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है बिकॉज चाइनीज प्रोडक्टिविटी क्रिएट करके पूरी दुनिया में माल बेच के इवेंचुअली जो एक्सेस कैपिटल है वो आखिर में अमेरिका में पार्क कर रहे हैं। चाइनीज को भी ये नजर आ गया है कि यार ये कब तक करते रहेंगे, ये तो इवेंचुअली कोलैप्स कर जाएगा, और अमेरिका का जो डेट अनसस्टेनेबल है वो वैसे भी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कर्ज में है अमेरिका, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चल रहा है, जिस तरह हम भी कर्ज में, हमसे बहुत ज्यादा कर्ज में है, लेकिन उन क्योंकि ग्लोबल ट्रेड डॉलर में चलती है, तो इस वजह से अमेरिका आज भी खड़ा है और हम नीचे जमीन पर हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं एक दफा पूछूंगा, आप लोगों को समझ है ये कि ये भी अभी जो बेसिक चीज बयान हुई है वो क्या हुई है कि चाइना का जो प्रॉफिट्स हैं वो हिस्टोरिकली जाके यूएस ट्रेजरीज में पार्क होते थे। अब चाइना थोड़ा अनकंफर्टेबल है वहां पार्क करने में, तो वो चाह रहा है कि इनको मैं कहीं और पार्क करूं, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो चाइना ने कहीं इन्वेस्ट करने होते हैं। कोई भी इंसान इन्वेस्ट करता है, चाइना भी उनको इन्वेस्ट करता है। For those who don't understand the concept, $80 billion is difference between exports and imports. Other Chinese companies do not get US dollars or euros, other foreign currencies. They get paid in Chinese yuan, which they use to pay salaries. अच्छा, ये Chinese companies की जो ये बात कर रहा है ना, इसका मतलब है कि जो चाइना से लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली बाहर से जब ट्रेड कर रहे हैं तो वो डॉलर में चाइनीज गवर्नमेंट के पास आ रहा है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट उस डॉलर के एवज युआन प्रिंट करके वो अपने लोकल लोगों को दे देती है, और वो लोग फिर आगे सैलरीज वगैरह युआन में देते हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट के पास जो डॉलर है, वो डॉलर जो है ना वो बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट के पास रह जाता है। These yuan simply get printed by the Chinese government. They are in principle supposed to print the exact amount, $80 billion, but they can also print more or even less depending on what they are trying to do in the domestic economy. The US dollars and euros and other foreign currency then stays on the bank accounts of the Chinese central bank. It has to keep some cash on hand, but mostly it wants to invest that money into something that will bear interest. Kind of like you put your money into CDs or even buy stocks. Acha, US treasuries are the, I was going to say safest, not anymore, investment, but certainly the simplest. You buy some US treasuries and you get 1 to 5% dollars per year. अब इसने वही बात की, उसने कहा जी हिस्टोरिकली अगर आपको कोई रिस्क विस्क नहीं है, आप अपना पैसा सारा उठाओ और वापस यूएस ट्रेजरीज खरीद लो, जैसे कि चाइना ने तकरीबन कोई $1 ट्रिलियन की ट्रेजरीज खरीदी हुई है ऑलरेडी, रफली 2 ट्रिलियन बनता है घूम घुमा के, बट वो उन्होंने यूएस की खरीदी हुई है। ट्रेजरीज क्या है? अमेरिका का लोन जो है वो एसेंशियली अमेरिका ने चाइना से पैसे लोन लिए हुए, जिसको वो ट्रेजरीज कहते हैं, और उसके ऊपर वो 1 to 5% इंटरेस्ट देता है चाइना को हर साल के आखिर में। तो चाइना का जो पैसा प्रिंसिपल अमाउंट है वो सारी अमेरिका के पास है, इंटरेस्ट वो उस पर वसूल करता है, सोच में कि इवेंचुअली वो अपना पैसा वापस निकालेगा, तो जहां उसने $80 अरब इन्वेस्ट किया वहां पे वो $150 आ जाएगा उसके पास ओवर 10 years or 20 years. That's the general thought. But that's become dangerous. So now Chinese government is trying to invest in other things like metals, oil, and bridges and railroads abroad, which is just a long-term investment. It spends dollars today, for example, $5 billion to build a railroad in Indonesia, and then Indonesia pays it back over 30 years with some interest. Perhaps not a lot of interest, but at least the Chinese investments are diversifying. It works just like the UST, but it's in Indonesia or Serbia or Brazil or Africa or Saudi Arabia. Instead of the US owing China $5 trillion, US owes it only $1 trillion. The $4 trillion, again, कैश कोई भी नहीं रखना चाहता, राइट? सो या तो आप जाएंगे जाके ट्रेजरीज खरीद लेंगे, या फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार मैं जाता हूँ और मैं जाके ना पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं प्रॉस्परस हूँ, मेरे पास मुझे मजीद चीजों पे इन्वेस्ट करने की अपने मुल्क में जरूरत नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि और कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहां पर प्रॉस्पेरिटी की पोटेंशियल है, जहां पे मैं जाऊंगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होके वहां पर वो लोग जब जाके उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, वो लोग काम करेंगे, वो लोग अपनी वेल्थ इंक्रीज करेंगे, तो उस वेल्थ का एक चंक जो है वो इवेंचुअली मुझे रिटर्न कर देंगे, तो मेरा पैसा जो है ना डायरेक्टली वो इन्वेस्ट हो रहा है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कि आपके पास पैसा आ गया, आपके पास 2 करोड़ रुपया आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है,
और अब आप कह रहे हैं कि यार मैं 2 करोड़ रुपए मैं अपने मोहल्ले में तो मैं नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि फार्मिंग जो है ना वो बड़ी चलेगी, तो मैं दूर जाता हूँ, एक फार्म में इन्वेस्ट कर देता हूँ। वो मेरा इलाका नहीं है, मेरे लोग नहीं है, मेरा कुछ भी उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन वहाँ पे फार्म होगा, उधर के फार्मर्स जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अगर मैं लैंड खरीद लूंगा, ट्रैक्टर वगैरह इन्वेस्ट करूंगा, तो वहाँ पे ग्रोथ होगी, फार्मर भी ज्यादा पैसा कमाएगा और मैं लॉन्ग टर्म पे ज्यादा पैसा निकालूंगा। तो इसी तरीके से ये लोग जा रहे हैं और जाके अब ये पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ताकि जगहें एलिविएट हो, वेल्थ क्रिएट हो और इवेंचुअली चाइना इनरिच हो। Nothing wrong with that enrichment. That's just basic investment. Anyone investing is trying to enrich themselves and also trying to enrich people in that process. Much safer. Otherwise, US would just steal it all and certainly never pay it back. Besides, when China builds a railroad in Indonesia, half the work is done by Chinese company, which means more income for Chinese companies and salaries for Chinese workers. Where it gives money to the US, all the money goes to the US weapons manufacturer who make missiles to give to Taiwan or Japan, so that doesn't make sense either ways. Now you understand the BRI too. Buying oil, metals, grain, etc. is for strategic reserves. US does that too. Strategic reserves are always used when the price of the commodity is high because there is a shortage. So you fill up the strategic reserves, say oil, when the price is medium or low, and then you sell it back to the market when the price is high. Both helping to stabilize the local price and actually making some profit, serves as interest. Then again, the price of commodity goes down, you fill up the storage again. This is one function of the government that helps stabilize the economy. And of course, in crucial times of crisis like the pandemic or war, and the government is able to use some of its surplus for and make some money. अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपको याद होगा कोविड के टाइम के ऊपर हमें सुनने में आ रहा था कि यार $0 की गैस हो गई है, गैस बिल्कुल सस्ती हो गई है, कोई बायर ही नहीं है, ऑयल बहुत सस्ता हो गया है, इस तरह की आपको सुनने में आ रही थी। उस टाइम के ऊपर जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, चाइना, यूएस टाइप की, इन्होंने बड़े बड़े hundreds of thousands of tons के स्टोरेज यूनिट्स बनाए हुए होते हैं, जहां पे इन्होंने लाके जो है ना ऑयल सस्ता खरीदा और उन स्टोरेज टैंक्स तो नहीं कहेंगे, they're huge, उधर उन्होंने डाल दिया। और दीज आर बेसिकली स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ दीज कंट्रीज, कि जहां पर अब जिस तरह जैसे ही ऑयल महंगा हुआ है तो इट डजंट मीन कि चाइना महंगा ऑयल खरीद रहा होगा। चाइना महंगा ऑयल भी खरीद रहा होगा, लेकिन वो अपने पुराने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से भी कुछ निकाल के ऑफसेट कर रहा होगा प्राइस, ताकि उनको डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ना आए जब एकदम से प्राइस बढ़ जाए। इसी तरीके से वो बहुत सारी और चीजें करते हैं, वो वीट स्टोर करते हैं, वो मेटल स्टोर करते हैं, वगैरह वगैरह। Of course, the big problem for China is that all the storage is full. China is preparing for war. Why else would they store so much food? Is the logic of brainiacs like Marco Rubio. ये एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है जो कि बेसिकली वही अगेन वो वॉर मंगरिंग कर रहे हैं, जैसे उन्होंने रशिया में किया कि चाइना तो बस जंग करना चाहता है, चाइना जंग करना चाहता है, अमेरिका जंग करना चाहता है, एक्चुअली चाइना नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका का सीन बैड हो रहा है और वो इस वक्त जो है ना द ओनली वे आउट फॉर देम है कि वो हर जगह पे जाके जंगें स्टार्ट कर दें और जो दूसरे का काम हो रहा है वो भी खराब करें। बट ये बेसिकली थीसिस ये बिल्ड कर रहा है कि चाइना स्टोर सो मच फूड बिकॉज इट इज शिटिंग डॉलर्स एंड डजंट वांट टू keep them in cash because US will devalue and steal it, which is exactly what Marco Rubio likes to do. But the dollars keep on raining, $100 million per hour, 7, 24, 365. ये वो दिखा रहे हैं नेशनल फूड होर्ड्स। चाइना के पास पूरी दुनिया में ये स्टोरेज ऑफ वीट है। चाइना ने like 51% of or more than 50% of all the wheat that is stored in the world today is with China. And again वो उसका premise ये build कर रहा है, वो कह रहा है भाई that is because चाइना के पास इतना कैश है, वो कैश को डाइवर्सिफाई करते हुए कहता है यार कैश नहीं मैंने रखना, इसको मैं क्या करूं, अच्छा ट्रेजरीज में लगा देता हूं, अच्छा नहीं यार फूड खरीद के रख दो, ऑयल खरीद के रख दो, so on and so forth. China's trade surplus every September from 2000 to 2023 in dollar billions. ये पिछले सारे सालों का दिखा रहा है, इस साल का ये $80 billion है, लास्ट ईयर सितंबर में it was around $85 billion, so on and so forth. Anyways, it's a very interesting thread, and what this thread did was कि इसने मुझे बहुत अच्छे से पहले तो ये एक्सप्लेन किया कि चाइना क्यों पागल है कि वो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स करता फिर रहा है। तो पहले तो ये समझ आया कि वो इस वजह से इन्वेस्टमेंट्स करता फिर रहा है बिकॉज अब वो अमीर हो गया और वो कह रहा है कि यार अच्छा मैंने कहीं ना कहीं करना है। तो सॉर्ट ऑफ सिमिलर लाइक के इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कहते हैं ना एक कंट्री की बैकबोन एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा कमाता है, वो पैसा कमा के कंज्यूम नहीं करता, वो और फैक्ट्रियां लगाता है, वो और चीजें करता है, क्योंकि उससे फिर बाकी लोग जो वर्किंग क्लास मिडिल क्लास क्रिएट होती है वो फिर इवेंचुअली कंज्यूमर क्लास बनती है। तो वो इन्वेस्ट करता है लोगों के ऊपर। तो चाइना भी वही कर रहा है कि वो बेसिकली रेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो लोग भी ग्रो करें और इवेंचुअली you know the more wealth they have the more they'll buy Chinese and then so on and so forth. तो ओवरऑल एक वो बनेगी। अमेरिका ने भी ये किया था विद यूरोप, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो उसके बाद उन्होंने एक मार्शल प्लान लेकर आए थे। यूरोप तो तबाह हुआ था पूरा का पूरा, और अमेरिका आया था और उसने आके इन्वेस्ट करके यूरोप को वापस रीबिल्ड किया था थ्रू द मार्शल प्लान, एंड इवेंचुअली यूरोप
became America's biggest consumer, and वो फिर जो उन्होंने एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया since World War II, वो इसी वजह से पॉसिबल हुआ. चाइना वही करना चाहता है, बट विद द ग्लोबल साउथ, विद अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. अब आपने बड़ा सुना होगा कि जी डेट ट्रैप. अब जब अमेरिकन या वेस्टर्न उनसे सुनते हैं तो वो जी एंटी चाइना आपको रेट्रिक देंगे, चाइना तो तबाह हो गया, चाइना ये, चाइना वो, चाइना BRI के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहा है, वगैरह वगैरह. वो इस वजह से रो रहे हैं क्योंकि जो पैसा उनके ट्रेजरीज में आ रहा था, जो उनके उनके लोन्स को फंड कर रहा था, वो पैसा खत्म हो रहा है. अब चाइना जो है वो जो कि इज बाय फार द लार्जेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है, वो ट्रेजरीज नहीं खरीदना चाहता, बल्कि वो कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करूंगा. बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्ट कर रहा है. अमेरिका को ये तकलीफ हो रही है कि अमेरिका के पास जो एक्स्ट्रा फालतू के डॉलर्स आ रहे थे ना, जिसके ऊपर वो अय्याशी पट रहा था, वो डॉलर्स खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसको अनोयंस होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो जाके पंगे करता फिर रहा है पूरी दुनिया में इस टाइम के ऊपर. So it's actually all connected. Like BRI is not just BRI. BRI takes money away from pumping America and actually distributes it to the global south, which is what America has a problem with. So they're actually going down like the devil to the global south people, whispering in their ears कि यार नहीं वो ना actually चाइना तो तुम्हें डेट ट्रैप में फंसाना चाह रहा है, चाइना तुम्हें डेट ट्रैप में फंसाना चाह रहा है. अच्छा, डेट हमें वर्ल्ड बैंक भी देता रहा है, IMF भी देता रहा है, और वो दे के ना फालतू चीजों में जाया करवाता रहा है कि जी ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग. भाई वर्ल्ड बैंक ने जितना हमें पैसा दिया है, जो 60s में उन्होंने डैम्स के लिए दे दिया, उसके अलावा आज तक जो पैसा दिया वो किधर गया, क्या उस पैसे का हुआ? चाइना आ रहा है आके हार्ड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी एंड इस तरह की चीजों पर इन्वेस्ट कर रहा है. अमेरिका तो आके फालतू तरीन चीजों के ऊपर आपके पैसे देता है, एड के पैसे देता है, जिसके पैसे का कोई फायदा नहीं चाहिए भाई तुम्हारी एड. लेट अस डू बिजनेस, let us work, let us create industries, let us grow ourselves. तो ये बेसिकली लार्जली एक वो है जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्यों है. अच्छा, एक तो ये हो गया. दूसरा ये कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से आज चाइना में लोग मिल भी रहे हैं, और वो तो सारे के सारे 140 कंट्रीज रफली जो मैंने फिगर सुनी है, उनके हेड्स मिल रहे हैं. तालिबान पहली दफा जो है वो एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं एज एन एंटिटी, दैट इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एज वेल. इस केस में जो बेसिकली ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका मकसद है कि ये एक पूरा का पूरा ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर इकट्ठा हो रहा है, और ये कह रहा है कि यार हम आपस में ट्रेड करेंगे, हम आपस में एक दूसरे के साथ काम शाम करेंगे, और हमें नहीं ज़रूरत कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को देखें, हम इसी में ही ग्रो कर सकते हैं. जिसकी वजह से अगर आप देखें ना, तो बेल्ट एंड रोड में क्या है जी, ट्रेड रूट्स हैं, एनर्जी कॉरिडोर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं. फेज़ 1 में ये सारी चीज़ें थी. फेज़ 2 के अंदर वो फर्दर फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और चीज़ों की तरफ जा रहे हैं. बट लार्जली द कॉन्सेप्ट इज टू alleviate a lot of these countries out of poverty through investment in relevant areas, जहाँ पे चाइना ने अपने भी एक्सपीरियंस में देखा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने से फायदा होता है. पहला. दूसरा ये कि एक्चुअली हेल्प दीज पीपल कनेक्ट इंडिविजुअली. अगर आप देखें ना, वो मैंने आपको उस दिन भी मैप दिखाया था एशिया का, तो फ्रेगमेंटेड सा है, अजीब सी दुनिया फ्रेगमेंटेड सी कर दी है. नेबर से लड़ रहा है. जिधर सस्ती गैस है, सस्ती गैस जो है वो हजारों मील दूर यूरोप को बेची जा रही है, और पाकिस्तान जो है वो नीचे समंदर से गैस मंगवा रहे हैं. बट इट डजंट मेक एनी सेंस कि सेंट्रल एशिया के पास सस्ती गैस है, ईरान के पास सस्ती गैस है, हम नहीं यूज कर सकते, इंडिया नहीं यूज कर सकता. क्यों? क्योंकि जी वेस्ट जो है इतना दूर, वो मजा नहीं, उसको पसंद नहीं आ रहा. आई मीन इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस. तो वो ये कह रहे हैं कि वो एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि यार हम अब वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, ये जो शिकंजा है वेस्ट का, जिन्होंने हमें पकड़ा हुआ है. अगर आपको याद हो, उस दिन मैंने आपको पुतिन की वो दिखाई थी स्पीच का हवाला दिया था. He spoke of similar things. He spoke of a new world order, an order where all nations are respected, an order जहाँ पर ये जो खासकर regional nations हैं, they work together with each other, collaborate and help themselves. इसके ऊपर मैं जो है आपको एक दिखाना चाहूँगा एक और चीज़. अच्छा, पहले मैं आपको ना इसकी लिंक दे देता हूँ for those who want to read it. India, China's fall and collapse, it has been going on for 20 years. अच्छा, ये जो है ना, this guy is the head of the China Belt and Road, I don't know, initiative or some think tank or some body like that. Going underground is a fairly famous
इंडिपेंडेंट न्यूज़ शो, उसके ऊपर ये एक इंटरव्यू है जो कि बेसिकली क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही है 10 साल की, तो उसके ऊपर उन्होंने इससे सवालात किए कि यार जो तमाम सवालात हम सुनते आ रहे हैं कि चाइना तो कोलैप्स कर रहा है, द वेस्ट ने रिजेक्ट कर दिया BRI। उसने बताया, उसने कहा भाई ट्रेड नेटवर्क चल रहा है, ट्रेन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम चाइना टू यूरोप, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट द फैक्ट है कि चाइना का सारा माल अब ट्रेन से जा रहा है, इट्स मच चीपर, इट्स मच फास्टर, नोबडी वांट्स टू गो थ्रू द शिपिंग राउट व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द US। उनको आग इस वजह से लग रही है बिकॉज वो अमेरिकन को आग लग रही है बिकॉज अमेरिकन यूज्ड टू कंट्रोल द नेवल सिस्टम, एंड वो लार्जली अब उनके कंट्रोल से चीज आउट हो गई है बिकॉज वो डायरेक्ट हो गई है। बट जो रेल नेटवर्क है, इट्स चीपर एंड इट्स फास्टर, so Europe doesn't have to rely on the shipping routes anymore. Europe most certainly does not have to rely on American routes anymore. They can directly trade with China at a much cheaper price. उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, उसने कहा आपको पता है कि 95% of the rare earth minerals, a lot of them which are used for weapons, the same weapons जो यूक्रेन में इस वक्त यूज हो रही हैं, वो चाइना से आती हैं। और ये फैक्ट है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल सारे चाइना में प्रोड्यूस होते हैं 95%, अप टू 95%। और वो सारे मिनरल्स जो हैं वो रेल नेटवर्क के थ्रू चाइना से आगे उज़्बेकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान से रशिया, और रशिया से यूक्रेन से होते हुए वो आगे यूरोप में जा रहे हैं, और फिर वो वापस वेपन्स बन के वापस यूक्रेन में आके रशियंस को मार रहे हैं। तो दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स अराउंड इकोनॉमी। रशिया भी वो ट्रेन जाने देता है, यूक्रेन भी वो ट्रेन जाने देता है, यूरोप भी वो ट्रेन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक्स ऑलवेज विंस। चाहे आप ऊपर जो भी रेटरिक कर लेना पॉलिटिशियंस का कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो essentially they're already part of the BRI whether they like it or not. China doesn't need कि लोग आके जना BRI का झंडा लहराएं. China just needs कि they have an opportunity to create a better economic system. The rest they know will follow. So खैर ये एक सवाल था, फिर और उन्होंने बहुत इस तरह के, this is a very good video. You guys should check it out. 28 minutes debunks a lot of the myths जो हम सुनते आ रहे हैं CPEC और BRI के बारे में। पाकिस्तान का भी उन्होंने बोला। अनफॉर्चुनेटली इसमें इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इवन दो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाली जो कॉन्फ्रेंस है, बट रिसेंटली हमने एक चीज़ देखी, वो ये देखी कि मैं थोड़ा सा मैं प्यार मोहब्बत से बात करूंगा बिकॉज हालात आजकल ज़रा नासाज हैं उस मुल्क के अंदर, लेकिन हमने ये देखा कि देयर वाज अ चेंज इन गवर्नमेंट, एंड इन दैट चेंज ऑफ गवर्नमेंट देयर वाज अ चेंज ऑफ जैसे कहते हैं कि सपोर्ट बेस, राइट। सो जो पिछली गवर्नमेंट थी वो वेरी प्रो चाइना थी, वो वेरी वेस्टर्न एंटी वेस्ट इन अ सेंस के एंटी इंपीरियलिस्ट थी, और वो ये कह रही थी कि यू नो व्हाट, लाइक वी सपोर्ट द ग्लोबल साउथ, वी सपोर्ट वो सारे के सारे। अगर आप नैरेटिव्स देखें ना, वो कहती है सेंट्रल एशिया स्टेट से हम जो है गैस लेकर आएंगे, हम रशिया से दोस्ती यारी करेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हमारा मसला तो नहीं है, हम चाइना का CPEC एक्सपैंड करेंगे, हम जो है वो यू नो वो सारा कुछ करेंगे, क्या कहते हैं उसे, आपका मुस्लिम वर्ल्ड को कनेक्ट करेंगे, उनसे सारा कुछ करेंगे। इंडिविजुअल पॉलिटिक्स नॉट विथ स्टैंडिंग, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि वो इंडिविजुअली कंट्रीज का पॉलिटिक्स रही थी, बट लार्जली दैट वाज द पुश जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की थी। लेकिन फिर एक चेंज आया, और वो जो चेंज आया, उस चेंज ने लार्जली पाकिस्तान को उस कैंप से उठा के दूसरी कैंप में धकेल दिया, जो कि हमने पहले भी देखा है मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता रहा है। जब भुट्टो साहब, जिनके कम्युनिज्म से मैं नहीं एग्री करता, बट उनको हटाकर हमने वेस्ट की एक जंग ज्वाइन की, जिससे अगेन मैं एग्री नहीं करता, अफगानिस्तान वाली, तो वो भी यही हुआ था एसेंशियली कि जब दुनिया में एक सिस्टमैटिक चेंज आ रहा था, एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था थोड़े स्मॉलर लेवल के ऊपर, तो उसके असरात पाकिस्तान में हुए तो रिजीम चेंज की बात आई। मतलब वो ये हुआ कि यार जो गवर्नमेंट चल रही है उसको हटाना चाहिए। जब रिजीम चेंज की बात आई तो दे वर टेकर्स इन द मार्केट, और वो टेकर्स इन द शेप ऑफ अमेरिकन्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करके ज़िया उल हक साहब आ गए, और इवेंचुअली द रेस्ट इज हिस्ट्री। सिमिलरली इस वक्त पाकिस्तान में भी ये हो रहा है कि पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात में ज़ाहिर है महंगाई, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह वो सारा कुछ चल रहा था। उसके अंदर देयर वाज अ पुश फॉर अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट, उसको पेट्रनेज प्रोवाइड की गई फ्रॉम द वेस्ट। उस पेट्रनेज के नतीजे में हमने देखा कि जी यूक्रेन की जो आर्टिलरी है वो पाकिस्तान से गई। फैक्ट्स हैं सामने अवेलेबल है, अब तो उसका वो भी आ गया है जो क्या कॉन्ट्रैक्ट जो कि वो होता, पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मना कर दिया था, पर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्विटर पे अवेलेबल है, जिसमें पाकिस्तान से खरीदी गई हैं वेपन्स जो कि यूक्रेन में गई। आपको याद होगा पिछली गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम न्यूट्रल रहेंगे यूक्रेन के केस में।
इस गवर्नमेंट ने आके खामोशी इख्तियार की, बट एसेंशियली इन्होंने जाके, और उसी टाइम पे एक्चुअली ये हुआ था कि जो हमारे चीफ साहब थे उन्होंने एक फोरम पे बोल दिया था कि जी रशिया को हम कंडेम करते हैं, विच वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी, बट आपको क्लियर फॉल्ट लाइंस वहाँ नजर आ गई थी कि द एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट आर ऑन टू वेरी डिफरेंट पेजेस. द एस्टैब्लिशमेंट एसेंशियली थिंक्स कि हमारा फ्यूचर और दुनिया का फ्यूचर अमेरिका के पीछे उन्होंने उसके ऊपर वेट डाल दिया. और उसको फिर हम आगे आगे देख रहे हैं कि चूंकि वो हुआ तो फिर रशिया दूर हुआ, चाइना दूर हुआ, टू द एक्सटेंट कि अभी रिसेंटली चाइना की सीपेक का एक रिव्यू होता है. उस रिव्यू के अंदर जो जो चीज़ें हमने नए प्रोजेक्ट्स थे वो सारे उन्होंने मना कर दिया कि हम नए प्रोजेक्ट्स में नहीं इन्वेस्ट करेंगे. गवादर में यूएस एम्बेसडर को ले गए, वो हंस रहा था और फिर तस्वीरें खिंचवा रहा था. ऑब्वियसली दैट्स हाउ डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू लुक टू द चाइनीज कि उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आके आप अमेरिकन को हैंड ओवर करके दे रहे हो. फिर आपने जो है वो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जो कि एसेंशियली आपको ये कह रहे थे कि जी ठीक है, वी आर गोना गो टुवर्ड्स द अमेरिकन कैंप. और अप अंटिल ये जो रीसेंट पैलेस्टाइन एंड इजराइल वाला जो नया मसला नहीं खड़ा हो गया, वरना जब तक वो मसला नहीं हुआ था तो उस वक्त ये आ रहा था जो कि यूएन जनरल असेंबली में रिसेंटली अनाउंस भी हुआ था कि जी सऊदी अरब जो है वो इजराइल को एक्सेप्ट करेगा और 6-7 और कंट्रीज करेंगी, जिसमें बहुत अफवाहें आ रही थी कि पाकिस्तान वाज वन ऑफ दोज कंट्रीज एंड इट वुड गेट अ डील इन एक्सचेंज. अच्छा, अब मसला ये है कि जो बीआरआई का पूरा मास्टर प्लान है जिसमें वी वर वेरी वेल पोजिशन्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, उस पे हम पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में, बिकॉज इट सीम्स लाइक, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि भैया अमेरिका का जो पीक है वो गुजर चुका है. द ग्लोबल साउथ इज राइजिंग and America is actually going through a very very tough time and they're trying to actively try to fight it. पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अभी भी, क्योंकि उनको पास्ट ट्रॉमा इतना है कि उनको लगता है कि नहीं जी अमेरिका ही चलाएगा हमें आगे जाकर, तो वो इट सीम्स एज ऑफ राइट नाउ कि दे हैव पुट ऑल ऑफ देयर कार्ड्स इन द अमेरिकन बास्केट, which I personally think is the most stupidest decision they could ever take. It is a short-sighted, not something जो कि फ्यूचर को देख रहा है. पाकिस्तान was very well positioned. हाँ ठीक है, थोड़े हालात खराब हो जाते, नहीं मिलता आपको IMF, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके कौन से बहुत अच्छे हालात हैं. बट एट द वेरी लीस्ट आप अगर ईस्ट के साथ मिलकर ऑल्टरनेट जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है उसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आप बहुत डिविडेंड्स रीप कर सकते हैं. बट इट सीम्स लाइक एज ऑलवेज आवर फॉरेन पॉलिसी इज गोना बी कंफ्यूज्ड एंड कंफ्यूजिंग, एंड जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं वो रीप कर लेंगे उन रिवॉर्ड्स को. और जब चाइना और ये वाला वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा सा पावरफुल इमर्ज करना शुरू हो जाएगा तो फिर उनको पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं होगी. और इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है कि वन ऑफ फैमिली मेंबर वेरी क्लोज टू मी recently spoke to me and he said कि उनका काम है मिनरल एक्सपोर्ट का फ्रॉम पाकिस्तान, and he spoke to me, said I met the Afghan ambassador in Karachi, और उन्होंने पूरा बताया कि तालिबान हैव कम इन, दे हैव रूटेड आउट करप्शन. वो सप्लाई चेन उन्होंने बिल्कुल सॉलिड कर दिया. वो कह रहे हैं कोई दो नंबरी नहीं होगी, इनका माल जो है वो पाकिस्तान बलूचिस्तान के बजाय वो अब अफगानिस्तान से आना शुरू हो गया है जो कि अब एक्सपोर्ट हो रहा है. उन्होंने कहा जी वहाँ पे वो एक ऊपर उज़्बेकिस्तान नहीं है, आई बिलीव ताजिकिस्तान से एक रोड निकाल रहे हैं जो कि बीआरआई से कनेक्ट हो रही है, और वो रोड पूरी कंस्ट्रक्ट होके नीचे ईरान तक जा रही है और ईरान से नीचे चाबहार पे जा रही है. सो द सेम सी पैक राउट इज नाउ गोइंग टू बी चाबहार, द अफगानिस्तान एंड ईरान. सो आपको वो बाईपास करके निकल जाएंगे. सो यू आर इडियट्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर जो कि कभी कोई सोच के डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते. और a lot of what I've told you, by the way, this is not just me rambling, this is stuff that I've been hearing from hardcore think tank circles in Islamabad, जिनसे मैंने सीखा कि जी सुपर स्टेट क्या होती है, सेंट्रल एशिया की गैस कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ट्रेड कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बट समहाउ पिछले एक साल के अंदर वो फ्लिप हुआ सारा का सारा. एक नए सेट ऑफ पीपल आए और उन्होंने एक नया फ्रेमवर्क बनाया और उन्होंने कहा कि अब ये रियलिटी है. तो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान. बट पता नहीं मैं पाकिस्तान पे किस तरह आया बेल्ट एंड रोड से. बट एनीवेज ये जो वीडियो बहुत अच्छी है, यू चेक इट आउट. इसमें उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया हुआ है, इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया हुआ है. इज एक्चुअली शेयर्ड लॉट ऑफ जो कि कॉमन क्रिटिसिज्म्स हैं उसको उन्होंने डिबंक किया हुआ है इसके अंदर. सो यू गाइस कैन वॉच दिस. अच्छा, उसके बाद फिर है जी टीचिंग इज अच्छा ठीक है. Just for in case those who don't know कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो there is obviously this article that talks about कि ये है क्या. Like Beijing is hosting global gathering as Xi Jinping lays out China's vision. तो इस गैदरिंग के अंदर चाइना का जो नया विजन है दुनिया का वो क्या होगा वो ले आउट करेंगे. Leaders, representative delegates from more than 140 countries, including the Middle East and many global South nations, are expected to meet in the Chinese capital for a carefully choreographed 2-day gathering.
अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो वो है ना कि ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है, ग्लोबल साउथ क्या होता है. इट वुड बी नाइस अगर आप लोग थोड़ा सा इसको गूगल करके देख भी लें ताकि आपको ये टर्मिनोलॉजी का आइडिया हो जाए. ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ. The concept of global north and global south divides. Global north and global south divides nations into a global context. ये आप देख लें, आसान तरीका है. ये global ये developing countries हैं. So that's America, North America and Europe and Australia. ये developing है. Much of Asia and North Africa and South America, and then least developed जो कि underdeveloped or least developed ये Central Africa largely. इसमें जो है ना जो ग्लोबल नॉर्थ है बेसिकली वो इट्स योर broadly comprising of North America, Europe, Israel, Japan, and South Korea, as well as Australia and New Zealand. And then much of the rest of the world is global south. और जो historically जो अब मोर एंड मोर आपको इसके बारे में एनालिस्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी. पुराने वक्त ना आप 5-8 साल पहले अगर ये बात कर रहे होते तो ये होता है कि क्या कंस्पिरेसी थियरी है यार, पागल हो क्या, पागलों वाली बातें कर रहे हो. अब एक्चुअली एनालिस्ट्स आर टॉकिंग अबाउट दिस मोर एंड मोर. एंड उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब एक फॉल्ट लाइन इमर्ज हो रही है और इंक्रीजिंगली पता लग रहा है कि अच्छा ग्लोबल नॉर्थ हैज बिन, उन्होंने हमें कॉलोनाइज किया हुआ था, फिर वो छोड़ गए थे, लेकिन आज तक हम कॉलोनाइज्ड हैं. हम अब नए स्ट्रक्चर में कॉलोनाइज्ड हैं जिसमें वो रूल बेस्ड ऑर्डर यूज करते हैं और ये यूज करते हैं और वो यूज करते हैं और वो हमें स्टिल कॉलोनाइज किया हुआ है उन्होंने. क्योंकि वी डू एवरीथिंग दे वांट. We enrich them every day in, day out. We have been enriching the global north. They are rich not because they are better humans or more cultured or smarter. They are rich because they have been enriching themselves off of our wealth, the wealth of the global south. And that is, it seems like, is now beginning to change. Thoda sana, before I move forward, I'm going to do a couple of things. First, I'm going to quickly go through some questions. अच्छा जी, do check it out. I can share my experience. अच्छा, weren't you in twice? Why do you support China and Russia to replace dollar even though they are authoritative? Wouldn't they misuse their currency? I agree, America misuses dollars, but still trustworthy than China and Russia. Ultimate comment है ना, खूबसूरत तरीन comment है ये, क्योंकि this is the ultimate product of the Western propaganda that we have been sold all our lives. सर मुझे एक बात बताएं पहला तो, what is the word authoritative? आपके दिमाग में ये डाला गया है authoritarian, authoritative. What does it mean? What makes China authoritative and not America authoritative? जब मतलब ये तो अब abundantly clear हो जाना चाहिए कि जो हमें keywords बेचे गए हैं, जो free world या वो था ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज बर्लिन में और फ्रांस में प्रोटेस्ट जो बैन हो रही हैं पैलेस्टाइन की, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? मुझे तो नहीं लगता. मुझे तो लगता है कि बड़ा अथॉरिटेरियनिज्म है वहां पर जब ये सारा कुछ हो रहा है. आज अमेरिका के अंदर जब अमेरिका आता है और आके ईरान के पैसे, मतलब ईरान के पैसे, ठीक है, वो सैंक्शन करके बैठा हुआ है, जो अमेरिका के पैसे नहीं है, वो अमेरिका ने सैंक्शन किए हुए क्योंकि वो यूएस डॉलर्स में. रशिया के पैसे सैंक्शन किए हुए क्योंकि वो यूएस डॉलर्स में. जब अमेरिका आता है और आके लिबिया के ऊपर बॉम्बिंग करता है, क्योंकि लिबिया जो है वो कहता है कि यार मैंने जो है ना अपनी ऑयल ट्रेड जो है वो डॉलर में नहीं करनी, या सद्दाम हुसैन के ऊपर बॉम्बिंग करता है जब वो कहता है कि यार मैंने अपनी ऑयल ट्रेड, और ये आप जाके देख लें, 1 year before Libya got bombed and 1 year before Iraq got bombed, both of them said कि जी हमने यूएस डॉलर्स में अपनी ऑयल की ट्रेड नहीं करनी. देन उसके फौरन बाद बॉम्बिंग हो गई. तो मुझे बताएं अथॉरिटेरियन कौन है, राइट? मुझे ये बताएं कि चाइना ने कितनी कंट्रीज को इन्वेड किया है पिछले 100 साल के अंदर? रशिया ने कितनी कंट्रीज को किया? चले अफगानिस्तान को कर लिया 1980s में. उसके अलावा अमेरिका ने कितना किया, लिस्ट आपके सामने. आपको सिर्फ बेचा गया है ये थ्रू ब्यूटीफुल मीडिया, एंड इफ एनीथिंग इट शुड बी अबंडेंटली क्लियर through what is going on in the Palestine and Israel conflict कि कंसेंट किस तरह मैन्युफैक्चर होता है. जिस तरह उन्होंने बिहेडेड बेबीज को और रेप को और एसेंशियली सेक्स को वेपनाइज किया और फेक न्यूज को लिटरली, मतलब आप सोचें वो बिहेडेड बेबीज वाला, वो जो बाइडन तक ने बोली उस चीज को. आप ये नोटिस करें किस तरह उन्होंने खेला. CNN उसको रिपोर्ट करता है, जो बाइडन कहते हैं मैंने तस्वीरें देखी हैं,
फिर वो जाते हैं और जाके एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि नहीं वो तो प्रेसिडेंट साहब ने नहीं देखी थी, वो एक्चुअली ना बैक ट्रैक कर जाते हैं। अच्छा, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लिया बैक ट्रैक करके, और मीनवाइल बोल भी दिया। तो जो मैस लोग हैं वो तो जो बाइडेन की बात मानेंगे ना, हु इज गोइंग एंड लिसनिंग टू द डिट्रैक्टमेंट दैट्स कमिंग। तो वो इस तरह आपके दिमागों से खेल रहे हैं, और वो पिछले 50 साल से खेल रहे हैं, पिछले 100 साल से खेल रहे हैं वो। एटलीस्ट आई थिंक अब वो टाइम आ गया है कि हम अपने आप को उस हिप्नोसिस से निकालें, and we can begin to see what's really happening in front of our eyes. I mean, I feel like in the age of internet, it's now abundantly clear in front of us. All we have to do is go out. So, sure, China, मैं ये नहीं देखें, China is not a messiah, nor is Russia the messiah. First of all, आपका जो statement है उसमें, China भी is looking out for itself, Russia is looking out for itself. We have to look out for ourselves, but they are definitely better because they're in the region, and particularly China, Russia not so much, but China का टोटल जो कॉन्सेप्ट है, द वे दैट दे वांट टू बिल्ड द वर्ल्ड ऑर्डर इज कि दे लार्जली वांट कि यार मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, तुम जो कर रहे हो तुम करो, लेट्स ट्रेड एंड लेट्स डू बिजनेस। आई डोंट वांट टू एक्सपोर्ट माय कल्चर, आई डोंट वांट टू एक्सपोर्ट माय वेस्टर्न वैल्यूज, माय प्रॉब्लम्स। मतलब अगर मेरी कंट्री के अंदर रेशियल प्रॉब्लम्स हैं या कल्चर वॉर्स हैं या ये मसले हैं, तो वो मैं आपकी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, आप मैं बिजनेस करो भाई, तुम अपने मसले खुद सॉल्व करो। That is the sort of a world that I'd like to live in. That is the sort of world that much of the global south is now beginning to want to live in. And that is the difference essentially कि हमें यार ये फालतू की बातें हैं कि ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर आगे 4-5 चीजें बेच दी और उसके बाद कंट्रीज बढ़ ही नहीं रही। 50 साल हो गए, हमारी कंट्रीज डेवलप नहीं हो पाती, हमारे हालात बेहतर नहीं हो पाते, हमारे लेफ्ट राइट जंगें हो रही हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, तो पीपल आर सिक ऑफ इट, एंड फॉर गुड रीजन। दूसरा आपने ये बोला कि जी यू वांट टू यूज चाइनीज एंड रशियन करेंसी, एब्सोल्युटली नॉट। द यूएस डॉलर needs to be replaced by something better, and this is not a movement just by from the global south, this is a movement globally. Bitcoin came out of this same movement because जो मेरी next topic अभी मैं इसके अंदर टच करने वाला हूँ वो है ही on the international monetary system which is designed to enrich and to provide authoritarianism to American exceptionalism। ये आप कीवर्ड्स बेशक देख लीजिएगा जाके, क्योंकि वो करता ये है कि वो जाके उन लोगों को कंप्लीट इम्प्यूनिटी देता है टू कंप्लीटली कंट्रोल द वर्ल्ड ऑर्डर विदाउट लुकिंग लाइक एन अथॉरिटेरियन स्टेट। एंड सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सेड कि यार वी डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन सेंट्रल बैंक, वी डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन क्यों आती है जब उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, हमारे यहाँ चीजें अप एंड डाउन क्यों होती हैं जब उनके सेंट्रल बैंक को प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड सो बिटकॉइन इज एन आउटकम ऑफ द of the excess of the US Federal Reserve Bank जो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद। एंड देन सेपरेटली आई थिंक वो तो एक ये ना कि एक डेमोक्रेटिक कम्युनिटी एफर्ट है, तो पोटेंशियली एज अ करेंसी कैन कम आउट। But the way that I see it, I think eventually there will be a rise of a super currency, not controlled by any one currency, but a currency that is a global currency, and जिसके नीचे basket of currencies होंगी, including dollar, including yuan, including a lot of these other currencies. I just want the US dollar to no longer be the reserve currency. I want it to be just another currency like any other currency. And I want them to not have the same level of control that they currently have. मुझे अमेरिका से कोई मसला नहीं है, आई होप दे कैन सस्टेन एंड ग्रो इंडिविजुअली, बट वो मैं इसीलिए इफ आई वाज इन अमेरिका आई वुड हैव वोटेड ट्रम्प। ही डिडंट स्टार्ट एनी न्यू वॉर एंड ऑल ही वांटेड वाज कि यार हम इनवर्ड फोकस करते हैं और अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेट्स स्टॉप वरिंग अबाउट कि जी इसराइल में क्या हो रहा है और कतर में क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है और उधर क्या हो रहा है। तो दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। अच्छा, America has big arm industry, which is essential for their economy, and they need some land to fight. Muzammil bhai, please keep doing these live streams. I don't get much time to myself up to date with what's going on. Through you, I get to know a lot. I get to know about a lot. That's good. Thank you. Whenever monopoly changes like America, broken monopoly of Britain, China, gonna have a rough time to establish their monopoly. I don't think we're going towards one monopoly from one monopoly to another. I think we're going towards a multipolar world, a world where multiple powers have exert equal pressure and वो आपस में negotiate करके अपना system चलाते हैं, which I think is a much better system. अगर even China as a singular entity emerge करेगा, I think that's going to be a problem as well. India should focus on expanding its market in the West, Middle East, and ASEAN. 100%. I think India and including all of Asia needs to connect and begin to
let go of like I said, मैंने multiple time mention किया कि एशिया अगर आपस में ही घुल मिल जाए ना तो it's just incredible. नीतीश सिंघाल साहब कह रहे हैं जी, India is not part of BRI, which is a big scale Chinese employment scheme. All products from China given on loan to weaker economies to win elections and then get them kneel before you. Nitesh bhai, yahi to aap, again, देखें, look, have an objective analysis. You're saying this because you have an anti-China bias. When I look at India, I don't look at India कि India तो बस तबाही हो जाएगा. I look at India as India doing a lot of right things. I give Indian example a lot of times, particularly when what you did with post 91, with what you did with your IT industry, with a lot of what you guys are doing. But you also need to begin to get out of the bubble of कि भाई India बहुत fit, and China bad, all things China bad. And maybe if you're able to get out of that, you will begin to see कि your enemy is not necessarily China, जिसके साथ आपके छोटे मोटे problems हैं, like border के 50 किलोमीटर का एक problem है, वो पहाड़ी मेरी है, वो पहाड़ी उसकी. But आपके जो ज़्यादा potential है वो actually region में है, rather than वो. तो ये जो आपने बोला ना कि Chinese employment scheme, weaker economies को करके win elections, क्योंकि वो Maldives में पैसे दे के elections जितवा लिए, या ये करवा लिया, ये वो करवा लिया. Again, that is the same sort of negative outlook that helps you miss the point. The point is that China has excess capital and China will invest that excess capital. They will. They can't keep that capital with themselves. They can't go around buying the US dollar anymore because people are going to be dumping US dollar very, very soon. So they want to invest, and there is nothing wrong with investments. Everybody invests, right? So कॉन्टेक्स्ट को 2 मिनट पॉज करें और जरा सोचें कि चाइना में इतना सारा पैसा है, वो जा रहे हो जाके बाकी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. व्हाट्स द प्रॉब्लम? Maybe that's the problem, right? Like maybe you having a problem with that thought is the problem in the first place, and maybe that's what we need to think about. अच्छा, RRR साहब कह रहे हैं जी, मुजल भाई प्लीज इनवाइट मोहम्मद अबीर मिर्जा अबीर. RR साहब आपने एक दफा बोल दिया ना, मैंने सुन लिया. अब मैं जो कर सकूंगा तो मैं कर लूंगा. आपने 50 दफा ये कमेंट कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं है. बार बार आप लोग आते हैं, स्पैम करते हैं, बराह करम ना किया करें. बट आई हैव एक्नॉलेज्ड दिस, एंड एट एनी गिवन टाइम इफ एंड व्हेन आई कैन डू दैट, आई विल डू इट. मुजल भाई प्रोपेगेंडा कैसे डिसाइफर करते हैं from these big powers, USA, Russia, China? I mean, like I mentioned earlier, I consume content from across all sides ताकि आपको सबके narratives मिल जाए. And then one of the things that I do is I really अब तो मुझे mainstream media largely मुझे realize हो गया है कि चूना लगा रहा है आपको. सब agenda driven है, वो चूना लगा रहा है. तो I spend a lot of time on X. There are a lot of really good threads. जब वो thread कोई डाल रहा है तो आपने backtrack जरूर करना है कि कौन लिख रहा है thread. क्या ये कोई रैंडम राइट विंगर है जो कि जो है ना बस आपकी मतलब की चीज लिख रहा है, जो कि अभी बड़ी रिसेंटली हुआ अगेन पैलेस्टाइन इजराइल के केस में, कि राइट विंगर्स जो कि सारे के सारे एंटी LGBTQ एंड एंटी फेमिनिज्म थे, जिससे पाकिस्तानीज बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे थे. देव सडनली इमर्ज्ड एज, मतलब पाकिस्तानीज परेशान हो गए कि ओह माय गॉड, ये इतने ज्यादा वो कैसे हो गए. वो ऑब्वियसली वो सारे कंजर्वेटिव्स थे भाई, एंड दे वर ऑलवेज प्रो इजराइल, सो ऑब्वियसली दे वर गोना बी लाइक दैट. सो बैकट्रैक करें, सी के द पर्सन दैट्स कमेंटिंग इज एक्चुअली legit or not. बट जिस तरह मेरे आप ट्विटर पे फॉलोअर पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग लोग मिलेंगे अनडिस्कवर्ड टाइप के, जो कि चाइना के ऊपर कमेंट्री करते हैं, रशिया के ऊपर कमेंट्री करते हैं. उनके लोकल अकाउंट्स मिलेंगे जिससे आपको अंदर की खबरें आ रही होंगी. जिस तरह आप जो बाहर का बंदा है ना, उसको पाकिस्तान का नहीं पता. पाकिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है अब, और वो बाहर वाले को नहीं पता. बाहर वाला सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया देखता है. तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि थ्रू सोशल मीडिया कैन आई गो टू अदर कंट्रीज and find out their nodes जो कि citizen journalism कर रहे हैं, analysts हैं, think tankers हैं. That really helps in sort of breaking through the propaganda essentially. अच्छा जी, फिर ये बहुत सारे दरमियान में आ गए, उसको मैं आगे जाता हूँ. एक चीज़ पर मैं करूँगा कि यार before I move on to the next one, actually, you know what, I'm going to pause this here because we're already at the 53-minute mark. I did not expect this to go this long. I do want to talk about in the next live, I want to talk about, and this is very exciting because I've spent last 1 week researching. आज मैंने पूरा दिन इसके ऊपर documentaries देखी हैं. I basically try to understand कि historically मनी सप्लाई किस तरह इवॉल्व की है. जिस तरह से कंट्रीज में जो मनी, जिसको हम मनी कहते हैं, जिसको हम करेंसी कहते हैं, कैश जो होता है, ये कब बना, कैसे बना, कब उठा, कब गिरा, कौन कौन से मोमेंट्स आए हैं जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम्स रीसेट हुए हैं इससे पहले, और उस वक्त दुनिया ने किस तरह इवॉल्व किया. और उन सारों को समझ के आज, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि ये इंक्रीजिंगली अब आवाज़ आ रही है, और मेरा भी अभी पर्सनली यही ओपिनियन है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ रीसेट विद इन द नेक्स्ट 2 years.
एंड जब रीसेट आता है तो दुनिया बहुत चेंज हो जाती है. मतलब आप लोगों की सोच भी नहीं है, आप लोगों की सोच है ही नहीं कि क्या आने वाला है. लाइक you cannot imagine the shared living memory of you have of the world. The understanding of the world is completely going to change. And so there's a lot of very interesting content. मैंने वो पूरा रखी हुई है वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज जो मैंने सारी देखी थी, उसमें से जो अच्छी अच्छी थी वो मैंने सारी निकाल ली थी कि मैं वो शेयर करूंगा. I'm gonna do that next on Wednesday for you guys when we get here next. But before we wrap this up, we have around 19 more minutes before 12 बजते हैं पाकिस्तान में. I want to hear from you. First of all, I'm going to put up this stage now कि question and answers की तरफ हम जा सकें पहला. But before we go towards question and answers, I would love for you guys to let me know ये formatting कैसी थी, आपको समझ आया, मजा आया, बोर तो नहीं हुए. क्योंकि मैंने बहुत सारी अपनी जो थॉट्स हैं, जो मेरे इतना अर्सा का माइंड मैप बन रहा था, जो मेरी रिसर्च होती है उसको मैंने सॉर्ट ऑफ समराइज करके शेयर करने की कोशिश की है. आई एम वेरी रस्टी, आई एम नॉट द बेस्ट एट दिस राइट नाउ, बट आई होप ओवर टाइम आई कैन बी बेटर. But how was it? Like, what are your thoughts? Were you able to understand? I was seeing the view count and वही 30-40 पे हम शुरू हुए थे. मुझे डर था कि क्योंकि आज हम रैंडम बकवास नहीं कर रहे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह 120 पे we're static and I think ड्रॉप रेट नहीं आया. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि people did like it. नीतीश सिंह साहब कह रहे नाइस रिसर्च सर, थैंक यू सो मच. Mohammad Atif Faruqi साहब कह रहे हैं what kind of research sir? I am going to talk about this on the Wednesday episode. Nitesh Singhal साहब कह रहे हैं one question, which country to look up to regarding the development seen by people of the developing world? Then all of the tech and innovation is coming from USA, pinnacle of freedom on steroids. I think you don't necessarily have to look in today's day and age. You don't have to look at countries anymore. You definitely, I mean, the three top countries to look out for are definitely the US, India, and China. But I don't look at countries anymore. Countries I only look for in terms of के economy and so on and so forth. But होगा ये कि जैसे चीजें चेंज होंगी ना, अब यूं करके कंपनीज आएंगी और यूं करके कंपनीज जाएंगी. हालात खराब होंगे, कंपनीज निकल जाएंगी, रिलोकेट कर जाएंगी. When we're in the age of tech, we're in the age of AI. It's all soft. It's all in the air, right? So you can relocate. जिस तरह पुराने वक्तों में अगर मैं कहता हूँ कि यार हार्ड इंडस्ट्री है, लाइक गाड़ियां हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, उसको रिलोकेट करना बड़ा टाइम लगता है. बट इंजीनियरिंग टेक को रिलोकेट करना इतना टाइम नहीं लगता. बट येस, द मोस्ट maximum amount of innovation right now is happening largely in the US and China, and India is beginning to catch up. And I would look out for India maybe 20 years from now. And I think personally, मेरे लिए ना India is a wild card entry. लोग कहते हैं इंडिया क्वाड के साथ है और इंडिया डेफिनेटली जो है ना एंटी यूएस है, whatever, प्रो यूएस है. I don't think so. I think India has always been non-aligned, and I think India, in my opinion, I think India will give the final blow to the US-led world order. क्योंकि इंडिया ने ग्रो करना ही करना है, और इंडिया की ग्रोथ भी उतना ही प्रॉब्लमैटिक है अमेरिका के लिए जितना चाइना की ग्रोथ है, बिकॉज लाइक आई सेड वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते. And so these three countries I would look at. Have you heard Ray Dalio talking about the Great Reset, sir? Absolutely. I'm a big fan of Ray Dalio, and I've shared his video as well a couple of times. I've actually just ordered his book. Somebody mentioned from you guys कि readings पे available है, तो मैंने order की थी, पाकिस्तान में deliver भी हो गया. I'm going to have take it once I go back next week. What is your opinion on IMEC? Is America also going the China way, like investing in infrastructure then in wars? Yeah, no, IMEC, I think I found it to be extremely stupid. There is nothing there. Literally, अच्छा ये मज़ेदार बात है, IMEC में trade already हो रही है, कुछ नया नहीं है, उसमें trade already हो रही है. It was literally a populist वो कि आपने एक announcement करनी थी कि oh my god हम ये करेंगे तो उससे ऐसा हो जाएगा, तो उससे वैसा हो जाएगा, just to showcase. And that's the problem with America. उन्होंने 2 साल पहले वो Build Back Better World ले आए थे. कहाँ है उनका Build Back Better World? We're going to counter BRI. भाई BRI is going to genuine countries solving genuine problems. You just want to do the same propaganda that you've done for the last 100 years and expect the same results. The world has changed, bro. Move on. Seriously. So I don't see IMEC as anything logical. क्योंकि देखें, आप इकोनॉमिक्स को देखें, ट्रेड को देखें, IMEC क्या कर रहा है? लाइक इंडिया के पास वो वाटर्स पहले भी थे, वो वाटर्स पहले भी वहीं से जा रहे थे. कोई ट्रेड रूट कोई ऐसा नहीं है कि पहले कोई और ट्रेड रूट था, वो एक्सपेंसिव था, अब ये वाला ट्रेड रूट आ जाएगा. इट्स द सेम थिंग. उसको आप थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लोगे, श्योर, बट इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ वेरी मेजर इम्पैक्ट. एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं बार बार ये कहता हूँ, ये आप देख लीजिएगा. अगर आप थोड़ा सा
टाइम गुजारे ना, तो मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती होगी अगले 1-1.5 साल के अंदर। पर्सनली मुझे लगता है, और मैंने सर्टन लोगों से पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया में भी बात की है जो कि इस चीज़ को कहते हैं कि हाँ जी, वी एग्री विद यू, योर एनालिसिस एज वेल। मुझे लगता है सेंट्रल एशिया की गैस इंडिया तक पहुंचेगी और इंडिया को एक्सेस मिलेगा टू ईरानी मार्केट और ईरान से तुर्की से होते हुए यूरोपियन मार्केट थ्रू लैंड, बिकॉज दैट इज मच मोर ऑप्टिमाइज्ड। अगेन, हम स्टूपिड हैं इंतहा से ज्यादा कि हम स्टूपिड चीज़ों पे लड़ रहे हैं, और ये इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी रियलाइज द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ ऑल ऑफ दिस, बट दिस विल हैपन. I love the content along with proper referencing. Is there any way Pakistan can capitalize on BRI if China is going to go to Afghanistan? Sir, Ahmed Wasab, absolutely they can. They still can. And I think BRI is not just a one set of thing, right? It's basically, like I've mentioned, India ka. Eventually, it is an entire network of infrastructure that allows for everyone to trade with everyone. So Pakistan can. जितना जल्दी कर ले उतना ज़्यादा फायदा होगा, कंपाउंडिंग पे आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा. मदन भाई, आज के लाइव का स्ट्रक्चर तो शेयर कर देते. कमेंट सेक्शन फील्स लाइक एन एको चेंबर. मंकी मोली साहब, मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, आपने शायद लेट ज्वाइन किया. मैंने कहा था मैं पहले आधे पौने घंटे जो है ना बोलूंगा और फिर मैं क्वेश्चन आंसर में आऊंगा. वो आपने सुना नहीं शायद. समझ भी आया एंड एंजॉयड टू द फुल. थैंक गॉड. आई लाइक द साइड ऑफ मुजम्मिल व्हिच आई हैव सीन एट फर्स्ट एपिसोड ऑफ 3 सीजन ऑन पॉडकास्ट, आई गेस. हाँ, पॉडकास्ट पे देखा होगा आपने. बहुत अच्छी, thank you. Should we apply for Chinese immigration now and learn Chinese? I don't think they offer immigration personally, but I do think that those who have the opportunity and ability, it would be very smart of you to actually look for opportunities in China. And if you can relocate there, learn Chinese, there is a lot of opportunity there. People just aren't looking at it. जो early adopter होगा long term के ऊपर, मुझे लगता है कि they're gonna reap the rewards over time, particularly because China has an aging population, and I do believe that one way or the other, maybe not with passports, but maybe more like the Middle Eastern model, they will begin to 50-50. मैं बहुत इस पे वो नहीं कर रहा, but they will begin to bring people in over time in the future. तो मुझे लगता है immigration towards China बढ़ेगी. Maybe not naturalization वाली, again, like the Middle East model. But if you have the opportunity, why not? I know so many people in China जो कि रह रहे हैं और बड़ा successful हैं. Just want to make this a habit to share the resources as well in the description box after the live. I'm not able to find them after the live in the comment section. Fiza Khan, बहुत अच्छा आपने बोला. All of the things that I have shared are going to be in the description as well. Because अब मैं document, मतलब अब पहले मैं randomly खोल रहा होता था. अब मैं चूंकि मैंने document डाला था, I'm just going to copy paste the entire thing to the description. It was thoughtful. Muzammil Bhai, Assalamu alaikum. How do you manage to keep yourself fit and smart? Also at the age of 30, most of the people start to lose some hair, but you have great hair growth. Dani is here, Sahab. Sir, Dani is here, Sahab. I actually don't know. It is purely genetic, I suppose. I do try to eat a lot and I don't gain any weight. So Allah Ta'ala ki deen types. But I have recently started gaining weight and I've started to get a little bit of a tummy as well. तो अब मैं उस जर्नी में जाने लगा हूँ जहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं. I suppose dad bod and a fat tummy के साथ. Most enjoyable live so far. Today's session is great. The topic had a proper roadmap in your mind and we really got the cream in just an hour. It would have taken me a day to find out all the good resources and read through. ये format बेहतरीन है. बहुत कुछ सीखने को मिला. Instead of explaining one topic for 30 minutes, explain your thoughts on 2-3 during that time maybe. That is true. Shazam bhai, I just feel like I was just starting on this. पहले मैंने सोचा था, ideally मैंने आज 3 बनाए हुए थे. I was going to talk about the Belt and Road Initiative. I was going to talk about the international changing financial world order, and I was going to talk about the Israel and Palestine conflict and the controversy जो कि Mohammad Rizwan की tweet had caused. But because again मैं सबसे पहली दफा कर रहा था. अब देखें मुझे ये समझ आई है जो मेरे से पास लोग हैं ना वो सारे regulars हैं by and large. So if next time I reference something quickly and give my thoughts, so you already know what I'm talking about. And even if you don't, I can go and I can say listen उस episode पे जाएं जाके सारा समझ लें. तो इस वजह से आज थोड़ा सा ज़्यादा time लग गया. I'm sorry, but plan यही है कि 30 minutes, maybe 2-3 topics. They do not necessarily have to be super serious. Could be entertainment or a controversy जो कि entertainment industry में हो रही है, या this or that, some internet gossip as well. Again, depending on my interest area, वो भी हो सकता है.
Your opinions on race between India and China to represent global South. Which country do you think is better suited for the role? I think China is most certainly better suited because China does have a better legacy and a better foot to stand on. India is definitely starting and it's going in a good direction. I've said this before as well. India needs to do a couple of things. First of all, China has taken majority of its population out of poverty. India, unfortunately, वो inherently capitalist है, so there is a massive amounts of inequality in India, and to truly be a global leader, they first of all need to take out जिनके 700-800 million लोग जो poverty में हैं, which is very important. I'm not saying this as a cynic. I'm not saying this, oh तुम्हारे लोग poverty में हैं तो हैं यार, हमारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं. But they need to first fix that, first of all. Second of all, global leadership requires a lot of talking points, right? And India is not doing a lot of justice to itself by इंडिया को कुछ सर्टन चीजें करनी पड़ेंगी. इंडिया विल नीड टू क्रश ऑल द ऑपोजिशन, चाहे वो खालिस्तान की हो, चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे वो बाकी सारी की सारी हो. मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी मुझे ना मारिएगा, बट अगर मैं ऑब्जेक्टिवली देखूं तो इंडिया विल हैव टू क्रश ऑल ऑपोजिशन फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल, इंडिया विल नीड टू शोकेस के जी वी आर प्रो माइनॉरिटी, वी हैव अ वेरी मल्टीकल्चरल सोसाइटी. जो ये एकदम से इनका सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना कि हम एक हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट हैं, इट्स अ कंट्री फॉर हिंदूज, that does not bode well with the world. आप कनेक्शन लूज करते हैं, आप मिडल ईस्ट में कनेक्शन लूज करते हैं, आप अफ्रीका में कनेक्शन लूज करते हैं. अच्छा, अमेरिका बाय एंड लार्ज इज अ क्रिश्चियन कंट्री. Their presidents are all Christian, they're majority Christian, but they sell themselves as a secular country, right? So India actually had that going for it. It's destroyed that. So I think that is going to really be a problem for them over time. And like I said, इंडिया को एकदम से बहुत ज्यादा पंप किया गया है. Again, they're doing a lot of good things, but they're not as big as China. It's not even comparable right now. Like China is just miles ahead in terms of what they're doing, in terms of the scale of operation, in terms of the development. So वो जो एक सूडो शॉविनिज्म आया हुआ है, उसको थोड़ा सा कम करके फोकस, कीप योर हेड डाउन, फोकस ऑन द जॉब, ग्रो, provide prosperity to your population. I think that is definitely going to prime India for leadership position as well. India will take a lot of time. Only things holding us back is investment in research. This format was more interesting and informative. As always, you are full of knowledge and it always helps me making decisions beforehand. Thank you so much, Mohammed Shoaib bhai. बड़ा अच्छा लगता है मुझे इस तरह के comments पढ़ के. Muzammil bhai, Muzammil, why are you India, Pakistan, China and Russia don't why are India, Pakistan, China and Russia don't stand up to Americans because of their propaganda? Don't they see the big game? They are playing like taking over the world slowly. Ghazi Ali Abbas, bhai, bada acha sawal hai aapka. But keep in mind, America is the superpower right now in the world. And it's a game of chess. So everybody has to maneuver through that game of chess. There is a इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि अमेरिका ने बनाया हुआ है, जिसमें वो जब चुटकी बजाते हैं तो सब के सब उस पर छलांग लगा के घुस जाते हैं, जो कि ब्रेक हो रहा है बाय एंड लार्ज. लाइक अमेरिका अगर आप देखें ना, तो अमेरिका सीरिया में हारा है, अमेरिका वेनेजुएला में हारा है, अमेरिका अभी रिसेंटली जो है वो यूक्रेन में हार रहा है. और अगर आप इजरायली कॉन्फ्लिक्ट को फॉलो कर रहे हैं, दिल मेरा टूट रहा था लेकिन मैं फॉलो कर रहा था जस्ट टू कीप माई सेल्फ अप टू डेट, तो मुझे उधर भी हारते हुए नजर आ रहे हैं. क्योंकि पहले दिन वो आए और उन्होंने दे ओवरप्लेड देयर हैंड. They went in, they did massive brutalities against the Palestinians, और in the age, और उन्होंने अपने हिसाब से वही किया, कंट्रोल किया जी, पूरी दुनिया को नैरेटिव बेचा. The fake news was debunked very very quickly. Palestine से massive amounts of content came out. जो पूरा यूरोपियन यूनियन का नैरेटिव था ऑन यूक्रेन अगेंस्ट द एग्रेसर, वो उनका नैरेटिव आउट हो गया. सो उनको बहुत मार खानी पड़ी ये मीडिया के अंदर. और फिर जो हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं ना इस वक्त, जो पूरे यूरोप में, अमेरिका में और मिडल ईस्ट एंड देन एशिया, अक्रॉस एशिया हो रही हैं, दैट इज अ क्लियर साइन ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर. बिकॉज 2001 में भी एग्जैक्टली यही हुआ था. एक अटैक हुआ था, उसके बाद एक ओवर रिएक्शन हुआ था, और उस ओवर रिएक्शन में सऊदी, इनके बकौल सऊदी टेररिस्ट्स जो कि जाके अमेरिका को अटैक करते हैं, और आप उसके बस अफगानिस्तान को फाड़ देते हैं आके, और पूरी कंट्री तबाह कर देते हैं, 20 साल वहां पे लड़ते रहते हैं. सो आई मीन उस टाइम पे नोबडी स्टूड अप, नोबडी सेड एनीथिंग. इराक वॉर तो वाज जस्ट क्रेजी. देयर वर नो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, देयर वाज नथिंग देयर, बट अगेन nobody could stop them. But this time around, we're again seeing things are different. So
ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, चुटकी बजा की चीजें नहीं होती, बट यस वी आर सीइंग सर्टन साइंस एंड देयर आर सर्टन पुशबैक, और वो पुशबैक आहिस्ता 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 आहिस्ता, कभी भी आप बुली के सामने जाके चपेट नहीं मारते, चाहे 4 लोग इकट्ठे भी हो जाए ना, तो बुली जब होता है ना तो उसका एक सिस्टम होता है, वो जाते जाके एक को चपेट मारता है, सब सीधे होके बैठ जाते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग कर करके जाते हैं, और फिर जब बुली के पास आप जाके, जिस दिन आप बुली को जाके पहली चपेट मारेंगे ना, तो देन यू नीड टू होल्ड योर ग्राउंड, एंड द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू बिल्ड इटसेल्फ फॉर दैट मोमेंट. We knows a lot of media sources from the West. Can you share some media sources from Russia, China, MENA? There is RT, Russia Today, that you can find on Rumble. Rumble is a alternate media because YouTube and Facebook, Meta जो है वो अभी पैलेस्टाइन इजराइल को भी बैन कर रहा है. I don't know, YouTube मुझे भी ना बैन कर दे जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ, but Rumble is an alternate media platform like YouTube, जहाँ पर a lot of the people who are giving counter narratives are hosting their content. So Russia Today को बैन कर दिया गया था आफ्टर द यूक्रेन रशिया वॉर अक्रॉस द वेस्ट. अगेन वो प्रोपागेंडा करके बैन कर देते हैं, लेकिन वेस्ट की कोई आवाज आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है. तो ओके, तो खैर वहां पर आपको रशिया टुडे लाइव भी मिल जाएगा, आपको उनकी सारी प्रोग्रामिंग भी मिल जाएंगी, वेबसाइट्स पे भी आपको उनका, खैर वो तो कंटेंट आ ही रहा है. चाइना पे CGTN है, उनके बहुत सारे और इस तरह के नेटवर्क चैनल्स हैं. अगेन news.google.com, go to news.google.com, type the keywords, you'll find a lot of the stuff there. Vishal Thakur, man, I like you for your capitalist agenda, but talking points of left that global north make rich because of capitalism. What do you mean, Vishal Thakur? What? Explain this. Also, I saw a very interesting video today. I will share that with you in the next live. That basically essentially said that the West is not inherently capitalist. It was mind blowing because I always saw them as super, super capitalist. But he gave me a counter understanding of everything, and I was like, whoa, mind blown. That'd be interesting. You should check that out if that's what you mean. जो मुझे समझ आई है. What's your snap map for updates regarding Gaza and Israel? I think the Israelis are largely trying to get Iran into the conflict. Iranis have played smart yesterday, and they've said कि जी हम तो नहीं आ रहे participate कर रहे हैं और ये तो resistance खुद manage करेगी. So officially they don't want to get into it. Again, this does connect with the international financial markets. I do believe there is a stock market crash coming. जिसको छुपाने के लिए ये पटाखा जो फटा है, मैं उसमें टेन फॉइल हैट पहन के कहूँगा कि ये 110% इनसाइड जॉब है. और इनसाइड जॉब में ये नहीं होता कि सब के सब मिले हुए होते हैं. काफ़ी दफ़ा ये होता है कि लेट्स से हमास वांटेड टू डू दिस, द इजराइलीज न्यू इट, जो हमें सुनने में भी आ रहा है कि जी इजराइल को इजिप्ट बता चुका था एक हफ्ता पहले. द हमास वाज यूजिंग यूक्रेनी वेपन्स. इस तरह की बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लग रही हैं. But maybe Hamas was doing it because they wanted to do it, but maybe they were allowed to come in more than it was possible. Maybe they were pushed for this particular date as well. Because I think in the next couple of weeks, there will be a massive escalation. And as that escalation happens, I think there will be a market crash in the US. Why that will happen? Again, we'll talk about that on Wednesday because it's all connected. अमेरिका का एक साइकिल है जिसमें वो अपना जो जिस हमारी डायरोनॉमिक्स होती थी ना, तो उस तरह अमेरिका की भी इकोनॉमिक्स होती है जो कि वो बेसिकली पंप एंड डंप पॉन्जी स्कीम करते हैं. वो अभी इस वक्त एज पे हैं. They need to sort of fix that a little bit. And whenever they're about to fix that, so either there is a COVID crisis or there is a war that happens. Again, Afghanistan war and Iraq war coincided with something like that as well. So I think मुझे ये होता हुआ नजर आ रहा है. But I do also see कि जिस तरह से वो indiscriminately चाह रहे थे वो उस तरह possible नहीं हो रहा, because they're getting a lot of backlash this time around. And कल की तारीख में एकदम से जो U-turns आए ना, जिसमें ग्राउंड इन्वेजन के ऊपर पॉज लग गया, बाइडेन अब सडनली कह रहे ह्यूमैनिटेरियन एड करें. यूरोपियन यूनियन एक हफ्ता पहले कह रहा था जी हर किस्म की पैलेस्टाइन को एड खत्म. अब 3 दिन पहले कह रहा अच्छा जी एड को ट्रिपल करें, बताएं क्या मसला है, किस तरह करें, क्योंकि वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोगों का दिमाग है और लोग अपने हिप्नोसिस से खुलकर एक्चुअली फिगर आउट कर लेंगे कि क्या चल रहा है. You just want attention, you don't want that's a good song. You are comparing freedom of France with China freedom. Wow, Vishal Thakur. Vishal bhai, I hope one day you don't have to suffer the wrath of America.
I know we have every now and then. We've seen how the West wrote about Pakistan once upon a time. कि यो police state है जी, militarized ऐसी है वैसी है. We lived there. There was nothing like that. I've had friends go to China. They've lived a great life. Chill कर रहे हो China के अंदर. Yes, they have a different system, undoubtedly. But truth be told, if you still believe in democracy or pseudo quote unquote, so authoritarianism is on the rise. It is on the rise across the world, including your country. मोदी साहब जो हैं वो जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में वो हो रहा है, but he is a symptom of the same level of authoritarianism, right? So I think we, और मैंने स्टार्ट में ये बात बोली थी, by the way, मैंने स्टार्ट में ये बात बोली थी कि देखें, the world is changing and you really need to get with the program. So we've grown up with certain values that we were taught. There is a new world emerging, and that world is going to be much, much more authoritarian. That world is not going to be the sort of liberal Western values that we have learned to love and also learned to see that that's all a bunch of crap. There is a massive level of authoritarianism rising in the West. आप फ्रांस की बात कर रहे हैं. सर मुझे बताएं, फ्रांस के अंदर बुर्का बैन, इज दैट नॉट अथॉरिटेरियनिज्म? फ्रांस के अंदर जो प्रोटेस्ट्स बैन हो रही हैं, इज दैट नॉट अथॉरिटेरियनिज्म? फ्रांस में जब वो जा रहे हो जाके फोर्सफुली लोगों को अब 65 एज ऑफ रिटायरमेंट डाल दी उन्होंने, इज दैट नॉट अथॉरिटेरियनिज्म? When China does it, it's authoritarianism. When France does it, it's perfectly fine. When France was taking 70% of Niger uranium at 1/8 of the price, was that not authoritarianism? The fact is, authoritarianism is arbitrarily and loosely defined by people in the West. We just follow it, right? And that's exactly what I'm saying. And mark my words, the day your country becomes even seemingly successful, अभी वो इस वजह से आपको पंप कर रहे हैं because उनको पता है कि यार आपका 800 मिलियन बंदा गरीब है. You are not a direct threat today. You are a big country with a lot of potential. I can assure you, the day you become a real threat to the West, आप देखिएगा वो आपके पीछे किस तरह आएंगे. और वो गा भी रहे हैं, वो सेम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं. जब ये कनाडा वाला मसला हुआ तो उन्होंने अथॉरिटेरियन ऐसी बातें की नहीं की. Every country uses these terms. It's all politics inherently, right? So I mean, let's be real here. It's railway lines from the Saudi desert. Sayyid Shoaib Tahir Saab, sir, I'd love to see when it pans out. Honestly, right now it doesn't make sense to me. By the way, for those who don't know, we're talking about the what's the term for it? India, Middle East, Israel, Europe corridor. IMEC, yes. IMEC is better for Middle East, especially Saudi. Yeah, I mean, one thing I know for a fact is that Saudi is going to be really best friends with India because that's their next big oil selling market. But again, in the global context, it's still to be seen. Compared to BRI, BRI is a global, it's a mammoth project. What did you do and what books you read to find truth and meaning? Sir, I didn't read a lot of books. I did read a lot of articles and studies and stuff like that. I've mentioned about that a bunch of times on my other lives as well. Don't want to keep on repeating that. Format was great. Question, will China invade Taiwan? I personally don't think so. I think China does not have any reason to invade Taiwan. And it's going to give the West legitimacy to demonize China. I think West is going to try to push China to invade Taiwan the way that they pushed Russia to invade Ukraine, but the dynamic there was different. Taiwan does not pose a threat to China, and I personally don't see China invading Taiwan anytime soon. It just doesn't make sense. It's not required. China का सिर्फ एक इंटरेस्ट है, वो chip transfer है because ताइवान में सारी सिलिकॉन बन रही है and there is a race towards silicon chips. जो कि ऑलरेडी एक स्टडी आ चुकी है कि चाइनीज जो मेन लैंडर्स हैं वो ताइवान से ऑलरेडी सारी ट्रेड सीक्रेट्स चोरी करके चाइना में ले जा रहे हैं. सो दे डोंट इवन नीड टू डू दैट. लाइक दे कैन स्टिल विन इररिस्पेक्टिव विदाउट द वॉर. अच्छा जी. Discuss the impact of the Israel-Palestine conflict on Pakistan, particularly for freelancers. Okay, I will do that. It's a very large topic. We'll do that later on. I'm going to quickly rush to the questions नीचे वाले because बहुत सारे दरमियान में सवाल आ गए थे. मोहम्मद हुज़ैफा कह रहे हैं बहुत सारे हेयर मुजम्मिल भाई. हुज़ैफा भाई बिल्कुल आपकी बात बजा है because Indians get really, I don't know why, like they feel like कि बस हमने मैं इसलिए, so again my advice to my Indian friends is keep your head down and do your job, right? And the same advice I have to my Pakistani friends and the same advice I have to any global South person. Stop chest thumping. Honestly, you're not going to change my mind. You're not going to change anyone's mind. I don't know why you have this inherent need, this urge to sell India wherever you go. Where generally ना, और ये आप लोग बड़े स्मार्ट लोग हैं, आप IT के लोग हैं, आप लोगों को ये बड़ा जरूर पता होगा. If you sell a bad product,
you're going to turn away the customer for the rest of your life. So it's always good to get your fundamentals in check before you start marketing. Marketing is always phase two. You guys have jumped to marketing first and are not have not focused on the product yet. So I don't mind because ad revenue आता है इंडिया से ज़्यादा नहीं आता, उनका ही बड़ा पूरा बुरा CPM है. Right now I need the hours to complete for my what do you call it, AdSense to open up. तो अगर कोई घंटे मुझे मिल रहे हैं तो वो भी that's fine. But वैसे अभी सच्ची बात है कि किधर गए अपना, किसने बोला था अभी तक तो यार मुझे तो 2-3 लोग मिले हैं. एक तो नितेश भाई हैं, वो तो बेचारे इतने अच्छी बात करते हैं, नितेश सिंघाल भाई. और वो अभी तक जो नितेश भाई और विशाल भाई जो बातें कर रहे हैं ना, इन दोनों के ये तो अच्छी कॉन्वर्सेशन है, इसको मैं माइंड नहीं कर रहा बाय द वे. जस्ट मैं गलत ना मिसकंस्ट्रू हो जाऊं एज इफ आई एम कॉलिंग दीस पीपल बॉट्स. दिस सॉर्ट ऑफ चैलेंज इज गुड. It's those people who come in and say कि ये पागल है, पाकिस्तानी तुझे नहीं पता है, पागल है तू अपने बबल, वो वाला that's bots. I don't like that. But अभी तक तो it's fine, I think. Your views on Indians in Dubai, Sakit Sarif. I have no views on Indians in Dubai. That's like saying your views on Senegalese in Dubai. I don't have any views on Indians in Dubai. Like, what does that have to do with anything? Sometimes the questions are just fascinating, right? Like, कोई geopolitics का होता है, कोई economics का होता है. What does Indians in Dubai have to do with anything? Please help me understand the context here. Thoughts on boycott of McDonald's and other brands? I personally don't think these make any difference except for the first few weeks before everything goes back to normal. I don't agree with, I mean, I don't want to get canceled, but I don't agree with the boycott of McDonald's because just as in a capitalist society, McDonald's Israel did what they did. McDonald's Oman and McDonald's Turkey and McDonald's, a bunch of other McDonald's donated to the Palestinian cause. Brands are doing what brands always do. If it was just one-sided, if McDonald's of the world was just going on one side, ठीक है, boycott movement काम करती. But मुझे पता है पाकिस्तान में, for example, पाकिस्तान में जो McDonald's का revenue है, they employ a ton of people in Pakistan. And उसमें से क्या जाता होगा profit में? 10%. और वो भी आपकी government तो profit ही नहीं repatriate कर रही, so there is no profit essentially going out of Pakistan right now. So I don't agree with that. I do agree with the boycott campaign overall, but one has to not just succumb to emotions and be a bit more careful. So personally, I think मैं McDonald's के मामले में मैं थोड़ा सा उस पे हूँ because there has been a lot of other McDonald's from the Middle East who have donated to the Palestinian cause to give it a counterweight अब तक. विशाल ठाकुर साहब कह रहे हैं कि इनका मैं जो आपने सवाल किया कि विशाल भाई मैं आपका लास्ट लूंगा because there are other people as well and I want to give them time as well, but आपने कहा कि do you seriously want to live in China and Europe? To be very honest, in today's day and age, if you genuinely ask me, okay, do you want to live in China or otherwise, I would Europe. I would probably want China. If China can offer me a passport, I would definitely choose China over Europe today. Because the culture, the direction of the culture that Europe is going in, I don't agree with that. I don't have a problem with what they're doing. It's their life, whatever. But I don't agree with that culture, so I don't want my children to grow there. I probably would still end up there because I don't have an alternate choice. But a hypothetical that you ask me between China and Europe, I would probably choose China. And uski misal, if I'm able to give, let me see, if I can find it. My name is Ophir. I'm from Israel. You see that? Hey, I have come to, or basically new, check this thing out. This is the new 5G autonomous bus from Yutong. Just for context, this is a bus that roams around the city. It's autonomous and it's free. It's free for everyone. There is never going to be any charge for anyone ever to use public transport. That's China. China is, it's incredible
in terms of the infrastructure that they have deployed. America doesn't stand a chance. Europe does not stand a chance at all. हमें एक अथॉरिटेरियन ओ भाई मुझे एक बात बताएं चलें अभी एक और को आया मुझे आई रियली डोंट गेट यू आर कैपिटलिस्ट एंड जस्टिफाइंग अथॉरिटेरियनिज्म दैट्स योर ओपिनियन राहत भाई बहन because it is a unisex name so I'm not sure if you're a bhai or a behan you can tell me that but मुझे पता कैपिटलिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म का क्या ताल्लुक है ये इसको क्लियर कर लें जरा कैपिटलिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म दोनों का व्हाट्स द कनेक्शन देयर एक I mean India is authoritarian yet it's still capitalistic. China is authoritarian, which is a form of governance, and their economic model is capitalism with Chinese characteristics, as they call it. I don't think मुझे नहीं लगता they're opposed to each other. Middle East पूरा capitalist है, पूरा Middle East authoritarian है, and it's capitalist. It's beautiful. People love it here. They're extremely well off, and they're मतलब उनका सीन चल रहा है. So I don't think how they go against each other. First of all, second of all, China, like I said, you need to rewire. You need to unlearn all of what you've learned about China as an authoritarian state. जो बड़े बुरे हैं, जो XYZ करते हैं. Either go to China. Again, Rahat, I would love to know if you've ever been to China. Because I've had a lot of friends who've gone to China. They've loved it here. One of my family members is currently posted in the Pakistan embassy in China. What they tell me about China is just completely different compared to what I've learned in the media. And if you go on Twitter and if you go on YouTube and you find a lot of these Westerners who are in China, they give you completely different insight. They tell you कि यार वो नहीं है जो आज तक बताया गया है. तो very important to understand. पहला तो before we even debate कि authoritarianism सही है कि गलत है, पहले तो define करना जरूरी है कि यार वो authoritarianism है भी या नहीं है, जिसको हम authoritarian कह रहे हैं. आई नो नितेश भाई, ये तो मैंने वो अभी मैंने क्विकली खोल के एक रेफरेंस दिया था, जो मैं वीडियो ओरिजिनली लगाना चाह रहा था, वो एक्स के ऊपर आ जाई थी, जो कि उनकी सिटी की थी. दे वर डूइंग एन इनॉग्रेशन, वाज अ न्यूज़ रिपोर्ट. वो मुझे मिली नहीं, तो मैंने ये सिर्फ दिखाई. इट वाज वन ऑफ द सेम बसेस, बट वो एक पूरा शहर है जिसमें उन्होंने कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एंड आई फाउंड इट फैसिनेटिंग. आज ही मैंने देखी थी. आई ट्राई टू फाइंड इट इफ आई कैन, तो आई शेयर दैट ऑन द नेक्स्ट लाइव. यार नितेश भाई, चलो ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात. ये सारे पेरोल पे होंगे भैया, मेरे जो दोस्त यार गए हैं वो तो मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना. All I'm saying is, look, I'm not pro China. I'm not going to sell China. All I'm saying is try to unlearn and I did too. Like I was scared of China. I was like, oh my God, China is horrible. Try to unlearn what we've learned about China and maybe give them a real chance. Maybe go there. We go to Europe. We go to America. We don't go to China. We don't even try to figure out कि वहाँ पे क्या चल रहा है, because the people who've gone there love it. And so I would just say कि this idea, मैं वो जो कह रहा हूँ ना कि hypnosis है. There is a media hypnosis that all of us have gone through. Some of us are still hypnotized, and that media hypnosis has made certain narratives. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि you really need to start. Conversation का starter होना चाहिए है by removing all of those ideologies and truly trying to learn कि ये क्या है और कैसा है. Anyways, guys, we're at the 1 hour 27 minute mark. This was very nice, by the way. I had a lot of fun. I really like when I get questions which challenge me. So just so you know, I don't want to challenge me respectfully. Actually, let me just put it out there, because बदतमीजी से कोई करेगा तो उसको तो सीधा बैन करूंगा. भैया यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है. This is an authoritarian government of the SMAG बैठक, तो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी. I already have my chief of army staff, जो कि आज already मेरा ख्याल है लाइव पे है इस वक्त. I'd asked him कि वो आज सिर्फ मॉनिटर करे, बट वो मेरा चीफ जो है वो 2 मिनट में आपको फारिग करेगा. Having said that, respectful conversation, respectful debates, I would love to do that. Nitesh bhai, because you've been on here very regularly, if I can request something from you, I think it would be very interesting if we can have a one-on-one conversation on video, if it's possible for you. I'm going to put up my email address on the feed, and if you can, please
send me an email. We'll have you on the live sometime this week or the next to have a wider conversation. I genuinely think these sort of conversations are very important across all fault lines, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की fault line हो, चाहे वो left और right की fault line हो, चाहे वो religious versus secular की fault line हो. That is the only way to actually genuinely beginning to open up our minds. And in this new world order that I hope to create, I hope to help create, जो हमें उभरता हुआ नजर आ रहा है, that goes beyond interests of corporate groups and banks and states and actually human to human, जिसमें हम unlearn करें अपने biases को, and we're able to create a space where we have our own opinions. I don't want everybody to be a zombie, but we can have opinions can just be opinions. They don't have to be okay, तुम्हारी side or मेरी side, and then let's fight over it. But anyways, I am gonna wrap this up. Thank you so much for joining, all of you guys. As always, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, again, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा formatting का किया था, if you have any agreements or disagreements, if you have any thoughts, मुझे Instagram पे DM के ऊपर please अपनी thoughts ज़रूर भेजिएगा, because as I am evolving this live and I am going to aggressively upgrade this as I'm understanding more of what this space can achieve, so your feedback is absolutely critical. इसी के साथ साथ I'm gonna wrap this up with the very simple idea जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि जी प्यार बांटे हैं, प्यार करें लोगों से. सब लोग बेचारे बहुत ज़्यादा जो है ना वो आजकल, और खासकर आजकल I would say in all seriousness, what we're seeing coming out of Palestine is just absolutely hideous. मैं हर रात को I've been following it and just अब मुझे मेरी बस हो गई है, मैं वीडियोस नहीं देख पा रहा. मेरा बेटा है छोटा, उसको दिमाग में रख के जो मुझे नज़र आता है वो मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा है anymore. And so I know that a lot of other people in the world are watching that content, and they're it's a tough time for the Palestinians. All our prayers are with them, but also very important that there's a massive mental health crisis, because people are feeling helpless, people are feeling devastated, people are feeling depressed, and so I would say speak to your friends, speak to people around you. Try to spread love, as I always say, because I just feel like it's a tough moment for the world, and so the more we, at least the only thing that we have with us is कि हम एक दूसरे के साथ connect कर सकते हैं, and हम एक दूसरे का दुख दर्द बांट सकते हैं, और हम एक दूसरे को एक shoulder to cry on दे सकते हैं. तो do think about that for your friends, for your family, and for people around you. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You were watching SM8Z Betak. Thank you so much for watching, and I will... Today is the 16th of October 2023. Thank you so much for watching, and I'll see you on Wednesday.